Good afternoon. Hi, everybody. Formalities, important guests, lamplighting, स्वागत गान हो गया. थोड़ी सी मस्ती का टाइम मारते हैं अब. Let's have our alumni and let's celebrate the fact that they belong to our college and are going to be here with us to celebrate the 70th Foundation Day of the college. Let's begin with the videos that we have seen and some more. So a little more surprise, but we will begin with the videos. Could I kindly have the videos, please? दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे कर रही है और देशबंधु महाविद्यालय 70 साल पूरे कर रहा है. मुझे विश्वास है कि देश के गौरवशाली इतिहास में दोनों का भी योगदान बहुत बड़ा है. देशबंधु महाविद्यालय में हमारे ओम प्रकाश कोहली जी जैसे बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पढ़ाई का कार्य किया है. इस महाविद्यालय की ये विशेषता रही है कि देशभक्ति के साथ स्वाधीनता, स्वातंत्र्य और स्वावलंबन की पढ़ाई और संस्कार देने का कार्य इस संस्था ने लगातार किया है. प्लास्टिक मुक्ति से लेकर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम किया है. प्रधानमंत्री मोदी जी के एक श्रेष्ठ एक भारत बनाने का जो संकल्प था, उस अभियान में भी अच्छा कार्य किया है. इस महाविद्यालय की ओर से जो विद्यार्थी तैयार हुए हैं, उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया है. यह महाविद्यालय देश के भविष्य के नागरिकों को निर्माण करने वाला ऐसा महाविद्यालय रहा है कि जिसके कारण हम बहुत गौरवान्वित होते हैं. मैं आज इस 70 साल के उपलक्ष्य में एक तरफ भारत का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसी समय में मैं देशबंधु महाविद्यालय के प्रबंध समिति के चेयरमैन श्री RN वत्स जी को, सभी सम्मानित सदस्यगणों को तथा प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यरत यहाँ के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सभी पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थी, प्रशासनिक कर्मियों को देशबंधु महाविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं. और जिस प्रकार से अच्छे नागरिकों का निर्माण करने में ये महाविद्यालय आज तक बहुत आगे था, आगाड़ी पर था, इसी प्रकार से देश के भविष्य के नागरिक यहाँ से तैयार होंगे और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए वो सब बड़ा योगदान करेंगे. यही इतिहास, विरासत और संस्कृति इस महाविद्यालय की है और आगे भी यही काम होगा. फिर से एक बार सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं. नमस्कार. It really feels good to have personalized messages for our college, thanks to our colleagues who helped us get these messages. We also have a video which is going to take care of the journey and take us through what we have seen Deshbandhu develop over the years, the 70 years. Oculus, our society, has made a video and we'll present that to you now. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Hello, this is Desh Radio. I am Ramesh Gupta, son of Lala Deshbandhu Gupta, a well-known freedom fighter. This is the 70th anniversary video of Deshbandhu College. India's challenges were many. One of our greatest challenges was to try and give a home to those who had been rendered homeless during the partition. Maulana Azad made a reference to the dark days of the partition and spoke about the terrible miseries that the people had suffered. They had lost home and family and loved ones and had nothing when they arrived here. That is when the Ministry of Relief and Rehabilitation started their program in an attempt to bring education to those who had been displaced. It led to the founding of Deshbandhu College. And in 50 years, what Lala Deshbandhu Gupta
achieved many great things that he did for the country at the time, and he was only a student in 1921. He went for the Mahatma Gandhi's call for Quit India movement, and then he took that struggle and joined the freedom struggle at that time. My father passed away in 1951 in a plane crash, and a tragedy was there for the befallen on the whole family and all of us. We saw that Shri Ajit Prasad, who was the Minister for Rehabilitation, founded your college in my father's name. It was very apt, I suppose, because my father was involved in rehabilitation of the displaced people from Pakistan, and I think it is a great tribute to him and to his work that he used to have. The college had a simple beginning with just about 75 students, a lack of proper water supply, electricity, and even the absence of a proper transport system. Yet what the college never lacked was an unwavering determination. Even though the students were few, it is a testament to the vibrancy of the student community that they managed to form a Hindi society, a science association, a Sindhi literary society, a Bengali association, an economic society, a dramatic club, and even a college union. When I joined this college in 1979, I observed that culturally the Deshbandhu College has a rich tradition, and already there was dramatic society, and the students were really producing excellent plays. The college used to invite professionals as directors to tell them everything about the production of a play. There would be theory classes where they would be taught what is play, how it is staged, how it is managed, how dialogues are written, and all these plays used to win prizes, and they used to go for the competitions, like for example in IIT Pilani, BITS Pilani, in Shimla there used to be a great cultural festival even at that point in time. There is this list, one can really read out a list of societies. There is Oculus, the Film Society, there is the Dramatic Society, both stage and street, and then there is the Magnificent Sharpshooter. Oh wait, just let's see it. The National Cadet Corps is a youth development and voluntary organization. It provides a big platform to all the cadets for their well-being. NCC Deshbandhu also provide a big platform to all the cadets in their prestigious camps like RDC, TSC, TM Rally and many more. The motto of NCC is unity and discipline. Thank you. Three nines are 27. Days bolo. 3 times are 27. 3 times are 30. The sole aim of NSS unit Deshbandhu is to provide hands-on service to young students in delivering community service. The motto of NSS, "Not me but you," captures the essence of democratic living and upholds the need for selfless services. NSS helps the students develop and appreciate the point of view of others and also show consideration towards other living beings. जब हम देशबंधु आए तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ आए हैं, और बस दिल्ली आए हैं और कुछ दोस्तों के साथ आ गए हैं। हर कॉलेज एक देश की तरह होता है और उसमें हर डिपार्टमेंट एक राज्य की तरह होता है।
तो हमें जो राज्य मिला वो बहुत शानदार था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। वहाँ के टीचर ने, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर ने हमें सवाल करना सिखाया। जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो टीचर थे और उस वक्त जो उनके भीतर जज्बा था वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास था। और वो सिर्फ टीचर नहीं थे बल्कि उनमें से कई ए क्लास हिस्टोरियन भी थे। सुविता खत्री येल गई, अनिल सेठी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज गए। तो हमारे देशबंधु के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो हमें दिया है वो हमारी इतनी अच्छी मेमोरी किसी इंस्टीट्यूशन, हमने कई जगह पे काम किया, देखा, इतनी अच्छी कॉमरेडरी, इतनी बराबरी का अनुभव नहीं मिला हमें कहीं। As I just enrolled for my MA, we had received this huge grant from the university, and the department was supposed to go and buy books. I was a student still, but I remember my teachers in the department who insisted that I should be part of the team that would go to Daryaganj for this book hunt, because they felt that as a student I would perhaps be in the best position to decide which books to buy, to be absolutely aware of what books we had in the library, what books we needed. I mean, I just can't even believe that these were moments I lived through. So I was always inclined towards nature and used to go to forest wherever possible, but it was the Deshbandhu College and the faculty there, particularly Dr. B.P. Saxena, who guided me for my career, and also the syllabus that we had, ecology and all. When I read it, I knew where I had to go. And today I am there because of the guidance and support of the faculty and the path that I chose. What I am today in Delhi, it is because of the foundations laid down upon my career by this college. It was a small college, no resources, hardly any canteen, but teachers were committed to teaching the students. Some of the best teachers were there because they were committed to teaching rather than looking after good names. From 1965 to 2022, its journey is a journey of a college which is proud of its past and present. मेरी जो हायर एजुकेशन की जर्नी है वो इसी कॉलेज यानी देशबंधु कॉलेज से शुरू हुई थी, और मैंने बीए यहाँ से किया था। उसके बाद मैंने एमए हिंदी किया यहाँ से। जो हमारे टीचर्स थे उस समय के वो बहुत अच्छे स्कॉलर्स थे अपने अपने फील्ड के। यहाँ हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली, जो बाद में गुजरात के गवर्नर बने थे, और वो डूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो है उसके बहुत एक्टिव मेंबर थे, और वो DUTA के प्रेसिडेंट भी बने थे। और सबसे बड़ी बात थी कि फ्रैक्शनिज्म से अलग होकर के वो लोग सबके लिए काम करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। मैंने हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज, इन दो कॉलेजों में पढ़ाया। देशबंधु कॉलेज में लंबे समय तक 1960 से लेकर 2003 तक। देशबंधु कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ जिस भी कैपेसिटी में रहा, जिस भी रोल में रहा, वहाँ पर टीचर्स ने हर रोल में मुझे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। After joining the college in 1966, I remained in the college till 69, and I had the privilege of officiating as a principal in 2 or 3 tenures. And I always considered this college to be like a temple, and whenever I enter the college, even now after retirement, I have the same feeling of reverence. This has been the most memorable and most happy period of my life. I found that people around me, our students, everybody were so nice, and the college atmosphere was such, there was such a bonhomie here. When I came to Deshbandhu College, I instantly felt that this is the place where I really belong. 1967 जून या जुलाई से मेरी एक इनिंग स्टार्ट हुई इस कॉलेज में। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी यादें, जिसमें मुझे बेस्ट टीचर्स मिले। मैं सुन के आई थी कि कॉलेज में तो बस टीचर्स लेक्चर देते हैं और बच्चे अब जो चाहे उसको नोट कर लें, नोट्स ले लें, उनके ऊपर है। लेकिन इतना पर्सनल टच टीचर्स का, इतना खजाना है मन में इस पारी से जुड़ा हुआ
कॉलेज की स्टूडेंट होने के नाते एक गर्व मन में है, तो कॉलेज में अध्यापन कार्य में अपने गुरुजनों के साथ उनके बताए हुए, उनके गाइडेंस के अंडर जिस तरह के मैंने अनुभव पाए, मैं अपने जीवन को बहुत धनी मानती हूँ। We inherit a rich legacy of teaching and learning in this illustrious institution. What was introduced much later was done by us since beginning. We have had an illustrious tradition of debates, discourses, seminars. So teaching and learning is not merely about classroom teaching, which has been of a great and tremendous importance to us, all of us, but it is also important beyond classrooms. My journey with IQAC started way back in September 2015. Road to success was not so smooth. College, being constituent college of Delhi University, had limited financial resources and we had much to do. But with the persistent efforts of team IQAC, continuous and unconditional support of our former and present principal, teaching and non-teaching faculty members of DBC family, and all our dear students, we have achieved many milestones. The credit of the success of IQAC goes to them all. Deshbandhu College is very close to my heart and soul. I'm associated for more than 4 decades with Deshbandhu College. As a student, as a faculty member, as a researcher, and now as a vice principal. I have experienced each and every phase with full satisfaction. At each point of time, I found Deshbandhu College nothing but excellent. The specialty about Deshbandhu College is teacher-taught interaction. This I remember when I was a student and also as a teacher. Deshbandhu College, the teachers are not just teachers, they are mentors. They won't only teach, they educate. नमस्कार साथियों, देशबंधु कॉलेज के 70वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित ही ये क्षण किसी एक के प्रयास या प्रतिफल का परिणाम नहीं है, बल्कि अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक देशबंधु कॉलेज के प्रत्येक सदस्य, हमारे शिक्षक, हमारे नॉन टीचिंग, हमारे सभी छात्र और छात्राओं की लगन, अनुशासन का परिणाम है जहां हम आज पहुंचे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब कॉलेज अगले 1-2 साल में देश के 10 कॉलेजों में से एक कॉलेज होगा। ऐसी हमारी पूरी संभावना है और मुझे विश्वास है अगले 2 साल में हमारा ये प्रयास होगा कि हम देश के 10 सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक कॉलेज होंगे। साथियों, एक बार फिर से आप सभी को हमारे कॉलेज के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. That was a lot of effort at every level by the committee, by the students in taking the videos and editing them and giving us this final result. Thank you so much, Oculus. We also have another video now, which is Building Deshbandhu College, and we want our alumni to go through it. This has been done by sharpshooters under the guidance of Mr. Saswat Bhattacharya. Building Deshbandhu College. Deshbandhu College stands historically rooted in Kalkaji, a South Delhi residential area near Nehru Place, a major mobilization spot for Delhiites. The college was established on 3rd of August 1952, inaugurated by Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of independent India. Today, the college celebrates the completion of its 70 glorious years. Spread over 10 acres of Aravalli landscape, it is the oldest college in South Campus, University of Delhi. The college had a humble beginning with merely 72 students under the Ministry of Rehabilitation. Our first principal was Professor Katpalia, and legendary Sri Shanti Swarup Bhatnagar was the chairperson of our first governing body.
The college provides one of the best environments for its 5,500 undergraduate and postgraduate students, along with more than 200 teaching faculties and about 150 non-teaching faculties in the entire Delhi University, with a lot of exposure in various fields: academics, sports, cultural, theatrical, photographic, filmmaking, and many more. Deshbandhu College is well recognized in the whole of Delhi University and in the entire nation. Currently, it holds an All India rank of 28 in NIRF ranking 2022, MHRD Government of India. नमस्कार साथियों, देशबंधु कॉलेज के 70वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस शुभ दिन पर मैं देशबंधु परिवार की तरफ से सबसे पहले नमन करना चाहूँगा देशबंधु कॉलेज के संस्थापकों को। मैंने जब 28 मई 2018 को देशबंधु कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा पहला लक्ष्य था कि मुझसे पहले जो प्रिंसिपल रहे उन्होंने जो जो कामों की शुरुआत की थी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उनको पूरा किया जाए और उसके अलावा जो जो और कामों की ज़रूरत थी यहाँ पर उसको एसेस करके पूरे स्टाफ को साथ में लेके, टीचिंग और नॉन टीचिंग विद्यार्थियों को साथ में लेके उनसे पूछ के क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या सुधार हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में या और तरीके के सुधार हो सकते हैं, वो जानकर फिर इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहली चुनौती थी हमारा जो साइंस ब्लॉक, जो ओबीसी एक्सपेंशन में ग्रांट मिली थी उसमें हमने स्टार्ट किया था साइंस ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 का नाम देते हैं। वो बिल्कुल उसका काम मिडिल में था। तो सबसे पहले हमारी चुनौती वही थी कि उस काम को पूरा कराया जाए। तो हमने धीरे धीरे लगकर, बीच में बहुत सारी बाधाएं थी, तो उस ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 के काम को हमने पूरा किया। सारे साइंस डिपार्टमेंट्स को, पूरे कॉलेज में जितने भी हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, उन सभी को हम एक अपने ब्लॉक में, साइंस ब्लॉक, जिसमें ओल्ड साइंस ब्लॉक का नाम APJ अबुल कलाम ब्लॉक है और न्यू साइंस ब्लॉक को हमने नाम दिया है PC रे ब्लॉक, जिनको हमने सर प्रफुल्ल चंद्र रे के नाम पर रखा है। तो ये आज यूनिवर्सिटी में हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइंस की बेस्ट फैसिलिटीज़ है। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि देशबंधु कॉलेज की आर्मी विंग, उसको जो एल्यूमनाई एसोसिएशन है NCC की, उन्होंने देशबंधु कॉलेज की NCC को मोस्ट एक्टिव NCC का अवार्ड दिया है। ನಮಸ್ಕಾರ ವಣಕಂ नमस्कार नमस्ते। अर्लियर थिंकिंग कि कॉलेज लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, स्कूल लाइफ से निकलने के बाद इतने इंटरेक्टिव सेशंस नहीं होंगे अपने प्रोफेसर्स के साथ, लेकिन जब कॉलेज में आए, यहाँ के इन्वायरमेंट को जाना, तब पता चला कि नहीं, कॉलेज लाइफ इज़ वे मोर इंटरेस्टिंग दैन द स्कूल लाइफ। मैं पिछले साल 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ बहुत प्राउड स्टूडेंट हाँ। मैंने 1 साल हो गया है, मेरे सेकंड सेम के एग्जाम आने वाले ने। क्लास के बाद हम इधर ही आते हैं, दिस इज़ अ चिल पॉइंट फॉर अस, हम सारे फ्रेंड्स इधर ही आते हैं। माय फेवरेट इज़ द डोसा दैट इज सर्व्ड ओवर हियर, छोले भटूरे एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा है। देशबंधु कॉलेज में पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया जगह है वो है हमारी लाइब्रेरी। अगर बुक्स की बात करें तो सिलेबस से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और अगर कोई बुक नहीं है तो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के उसकी डिमांड शो कर सकते हैं और वो बुक भी हमारे लिए जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। The college is awarded with Plastic Free Campus Award and Best Managed Library Award. The college library has a collection of well over 1 lakh books and its operation is fully digitized. It earlier had a capacity of holding 200 students and now it has been increased to 400. Even a specialized faculty zone has also been established for teachers' research work. Deshbandhu College has an excellent infrastructure for research.
we encourage the students to participate in the national and international conferences. For that, we have organized several national and international conferences. Then students are being offered the internships and also the summer training program. And here we encourage not only our students but the students of other college and other university, and under the able guidance of faculty members, they perform the research work. The college now also has a dedicated iForce Center under Ministry of Science and Technology research wing to facilitate students and faculty members alike to carry out independent and collaborative advanced level research. The main motivation to start this lab is this young minds, these undergrad students were very energetic, and that is the future of our country. An exclusive placement cell has been set up for students to turn them into young entrepreneurs. We also focus on the extracurricular activities which help in the overall development of the students, such as NCC, NSS, sports, and various society activities. We also renovated the old block, the oldest part of the campus infrastructure. The entire college now has LED light fittings, 5-star VRF all-weather air conditioning. Even the faculty rooms have now been modernized for teachers' comfort, research, study, or counseling the students, through which mentor-mentee programs can be pushed forward. In addition to these, the college has added 13 new rooms for all arts and commerce departments, including students' activity centers and girls' common room. A conference hall with a capacity for more than 120 sittings is nearing its completion. Apart from this, we are also planning to build a hostel for students and an auditorium with great capacity. The Biodiversity Park, a recently created natural beauty amidst Aravali. This park, where I'm walking, is spread across 4 acres of land. 10 acres of Deshbandhu College campus having 4 acres of greenery. A recently built natural beauty. We have introduced 65 different species which are native to this part of the world, and they all are growing very happily. The Aravali rock unearthed and installed here on campus during the Green Landscape project is estimated to be 1.5 billion years old. Radiate boundless love towards the entire world. Having the words of Lord Buddha in mind to spread the message of understanding, peace, and to celebrate and keep up the spirit of democracy, Deshbandhu College has installed a statue of Buddha in Vitarka Mudra and an Ashokan emblem. So dear alumni, I hope you remember these hooting days. Maza aata hoga? We'll relive them. Just in case there are some more unassuming alumni of ours जो पीछे जाके बैठ गए हैं और उन्हें आगे बुलाना पड़ रहा है, I would request कि आप please थोड़ा सा आगे आके बैठ जाएं so that we have all of you in one place. Yes, of course, we are very proud, and I hope we are very proud of having you with us, and you are very proud of having watched the journey that Deshbandhu has covered over the years, ever since you would have left our college. Of course, you remain a total part, and we will ensure that we will have all of you with us sharing your experiences as well. We also have another video, and since the students have worked so much and so hard, I think we will play the third one also. Here we go. ये बादलों की छाँव में आज के इस सुहाने से दिन को देखकर एक शेर अदा करता हूँ, इशाद कीजिएगा। देखो क्या नज़ारा है, देखो क्या नज़ारा है, आज मौसम बड़ा सुहाना है।
इश्क करने का गुनाह हमारा है, सीने में जो धड़क रहा ये दिल तुम्हारा है। चलो ले चलते हैं तुम्हें एक सफर पर, अंग्रेजी वाला नहीं हिंदी वाला। देशबंधु कॉलेज जो बसा है कालका माँ के पवित्र आंगन में, 10 एकड़ में फैला ये महाविद्यालय जिसे हमारे कुशल और काबिल प्रोफेसर्स ने नींव दी, जिससे ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए उत्तम पर्यावरण दे पाया। पढ़ाई के वातावरण को ध्यान में रखते हुए कॉलेज ने लाइब्रेरी को डिजिटली एनहेंस किया और सबसे वेल मैनेज लाइब्रेरी का खिताब हासिल किया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी के रिसर्च के लिए मॉडर्न साइंस लैब्स और आईफो सेंटर्स का निर्माण किया। केवल साइंस ही नहीं, आर्ट्स के क्षेत्र में भी उन्नति पाई। एनसीसी, स्पोर्ट्स, आर्चरी, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सोसाइटीज़ जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, फिल्म मेकिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी और पता नहीं क्या क्या। और ये मैं खैर सन 1952 देश को आज़ाद हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। अब देश को उन्नत बनना है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसलिए युवाओं का शिक्षित होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी भाग कालकाजी में एक महाविद्यालय की स्थापना मात्र 72 छात्रों के साथ हो चुकी है। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किंतु साउथ दिल्ली के युवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन कैंपस तक जाने में बड़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ रही है। बहुत से छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साउथ दिल्ली के कालकाजी में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता लाला देशबंधु गुप्ता जी के नाम पर देशबंधु कॉलेज की स्थापना की गई है। इस कॉलेज के पहले चेयरमैन विश्वविख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, गीता का प्रख्यात अंश कर्मण्यवादी का रस्ते महाविद्यालय के ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। श्री हरिश्चंद्र कठपालिया जो देशबंधु के पहले प्राचार्य हैं, उनके नेतृत्व में देशबंधु कॉलेज की पत्रिका देश का प्रकाशन प्रारंभ हो गया है। महाविद्यालय में एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि पुस्तकालय सिर्फ अभी एक हॉल में है। 204 छात्र महाविद्यालय के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही 2200 किताबें लाइब्रेरी में आ गई हैं। देशबंधु में एक बड़ा बदलाव दिखने लगा है। वर्ष है 1955। हमारा कॉलेज अब विद्युत उपकरणों से परिपूर्ण हो चुका है। श्री आर.के. सूद जो पुस्तकालय के संचालक हैं, उनके नेतृत्व में पुस्तक मेला का आयोजन सबको आनंदित कर रहा है। और तो और यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में देशबंधु पहली बार भाग ले रहा है। इसी तरह कॉलेज की एथलेटिक टीम ने पहली बार इंटर कॉलेज एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें नरेंद्रपाल सिंह शॉटपुट में अव्वल रहे। बात करते हैं 1956-57 की। श्री डी.एस. भाका के मार्गदर्शन में यहाँ पहला स्टूडेंट यूनियन बन चुका है। अब छात्राओं की संख्या 129 हो गई है। खेल के महत्व को और अधिक व्यापक करते हुए यहाँ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की स्थापना की गई है। महाविद्यालय में इस समय फुटबॉल, कबड्डी, नेटबॉल इत्यादि की शुरुआत भी हो चुकी है। सन 1958 अब देशबंधु में एनसीसी के 2 विंग आर्मी और नेवी की शुरुआत हो गई है। देशबंधु को एक नया ब्लॉक न्यू साइंस ब्लॉक के रूप में मिल गया है। इसी वर्ष सर्दियों में नौसेना वार्षिक प्रशिक्षण केंद्र कोलाबा बॉम्बे में आयोजित किया जाता है, जिसमें देशबंधु के कैडेट्स बेहतर प्रदर्शन करके ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। सन 1960 अब देशबंधु इतनी प्रगति कर चुका है कि प्रोजेक्ट इंडिया स्कीम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से भारत आए हुए छात्र देशबंधु भी आते हैं। इतना ही नहीं, अब कॉलेज में कई डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी सोसाइटी भी बन गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इसी वर्ष नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी को देशबंधु के कैडेट्स के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। समय बड़ा खराब आया, भारत और चीन का युद्ध छिड़ चुका है। साल है 1962। सेना में सैनिकों की पूर्ति के लिए एनसीसी में भर्ती अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ गर्ल्स कैडेट्स को भी स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी वर्ष संत प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक मशाल जलाकर देशबंधु का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अब बात करते हैं 1966 की। यह एक ऐसा साल है जब देशबंधु में उपलब्धियों की बारिश हो रही है। एनसीसी के 100 स्क्वाड और 70 स्क्वाड को गणतंत्र दिवस के दिन परेड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वर्ष इस महाविद्यालय के लिए इतना भाग्यशाली है कि 7 कैडेट्स राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए हैं। 1968 एक ऐसा साल आता है जब देशबंधु के एक छात्र रघुवीर सिंह बग्गा ने 101 देशों का साइकिल से दिलचस्प और रोमांचक सफर किया और प्रेम और शांति का संदेश दिया। देशबंधु राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब एनएसएस के साथ जुड़ गया है। साल 1974 पहली बार देशबंधु के एनसीसी कैडेट राजपथ कंटिजेंट के लिए चुने गए हैं। इस समारोह में श्री एमबी माथुर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और देखते देखते बीत गई एक सदी। इस दौरान देश के साथ साथ देशबंधु भी तरक्की कर रहा है और तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में बड़े बदलाव आने से चिट्ठी की जगह ईमेल, डेस्क की जगह डेस्कटॉप आदि नई बातें देखने को मिल रही हैं। इन आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद देशबंधु समय के साथ खड़ा है। कुछ ऐसी थी देशबंधु कॉलेज की नींव। बुलंद है इस महाविद्यालय की दीवारें जो बनी है मजबूत इरादों के चट्टानों से। अरे नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खैर एक बात बताओ, तुम्हें कॉफी पसंद है? नोचली मेरी कुछ ना दिखाई दे रहा। क्या हो गया तुम लोगों को? सांप सूंघ गया है सबको? हाँ? वैसे तो बहुत बोलते हो, बचपन का दोस्त है ना? बचपन का दोस्त है ना? बदला लेना है? लेना है बदला? लेना बदला? कैसे लोगे बदला? हाँ? गोली आंख में मारेंगे सालों की। लेना तुझे बदला लेना है? खींच लेंगे। मुझे नहीं पता, हर हालत में मुझे उनसे बदला चाहिए, बदला।
देखा तो नहीं हमारे को? भाई मुझे लग रहा है देख लिया, क्योंकि हम लोग जब कूदे ना। चल बढ़िया है, बाकी सब का है? कैंटीन होगा, कैंटीन चलते। मस्त मौसम हो रहा है, हम भी चल जल्दी। ठीक है, सही करा यार, वो बनकर क्या ही करेंगे। कैसा भाई? भाई बढ़िया। एग्जाम्स आ रहे भाई, पढ़ा नहीं कुछ भी। ये तो छोड़, पहले तो ऑनलाइन होते थे, अब तो ऑफलाइन है। भाई यार ऑनलाइन में तो हो जाता था, तू अभी तो छोड़ दे यार। कोविड से पहले भी तो लोग पेपर देते थे, हम उनकी तरह ही। चल यार सब छोड़, चलते यहाँ से, चलते हैं भाई। ठीक है, क्या करें यार, टेंशन हो रही है यार। नेक्स्ट टाइम से ना पढ़ाई करनी चालू करते हैं। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई अब तो। ये सोच पहले के बच्चे कैसे किया करते थे। यार पहले का हो जाता था, सब लोग का फ्लो बना हुआ था। हमने कब से एग्जाम्स ही नहीं दिए। वही 2-4 साल हो गए कोविड के चक्कर में, अब तो पढ़ाई होती नहीं है। डेडिकेशन चली गई है यार, अब कितने कौन बैठता है इतनी देर देर तक। वही कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हम। वही बात है यार, तू वो सब छोड़, ये सोच कि ये कॉलेज पहले कैसा हुआ करता था। ये बात भी है। चलिए, यहीं तक था हमारा सफर। विदा लेना चाहेंगे अब आपसे, क्योंकि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो मुझे बहुत दूर तक चलना है। और हाँ, एक आखिरी बात, तालियां। क्लास में चलो, अटेंडेंस तो मेरे ही हाथों है, फिर देखूंगी। Thank you so much. I hope we've relived some of those things again. We are very, very glad to have amongst us Mr. Prabhu Chawla ji also, and our alumni who are with us, all of you, with just one last video, which is by our alumni. We will just take a moment and show you that. It's the Roadies MTV fame, right? How many of you have heard of that? Our alumni. Yeah? So it's Raghu and Rajiv. Those are the two names, and we are going to present that video right away. Thank you. This is Rajiv Lakshman, Eco Honors, class of 95, proud Deshbandhu College student. Big hello to everybody, my Deshbandhu friends, alumni, and of course the esteemed faculty. Congratulations on the momentous occasion of the 70th anniversary of our foundation day. And thank you for inviting me, and I wish I was able to be there in person, but unfortunately I'm not. So here's my message to all of you. Thank you again for inviting me, because it has given me a chance to turn back the pages in my life and reminisce about my college days and how much Deshbandhu has meant to me and shaped me as a human being, as a person. It has shaped my approaches to my struggles in life. Raghu and I both entered this college as very naive, young, bubbly children, but left as smart, ready to take on the world, worldly wise young men. And I thank the faculty and the beautiful students of Deshbandhu College for contributing to my life experiences and giving me the tools to make it in life. A big part of my success is Deshbandhu College, and I wish each one of you a fond memory and a great time together. Whoever is there in person, I envy you, and make the most of this time. It's now non-pandemic time, so you guys can really let your hair down and enjoy. Also think of me and tell me all the gossip that happens later on. Next year, inshallah, I'll be there. Goodbye. Thank you again. This is Rajiv Lakshman. Okay, time to begin. So let's have all our family members here on the stage with us, and dear Honorable Governing Body Chairman, Mr. Vats, sir, please, along with Professor Anil Rai, the Treasurer of our governing body, our Principal, Dr. Rajiv Agrawal, please upar aaye aap, dais pe ab. It's time for us as family to welcome our alumni. We will also have our Vice Principal, sir, please, Professor Kamal Kumar Gupta,
our social media champion, Varsha ma'am, Professor Varsha Baveja. Chandrika ma'am. Chandrika ma'am is the overall in charge. I think even if she doesn't come up, I'm still going to be saying thanks to her for being there with us. So we've had our round of introductions in the morning, and I think we can begin straight away with Professor Vats to please, Srivats sir, you can come and kindly come and address the gathering. Of course, I forgot Professor Aditya Saxena, Dr. Aditya Saxena. Kindly, when I make this mistake, all the doctors turn professors. So I continue liking making that mistake. Please come up here, sir. Our IQAC coordinator. Vats sir, please. आज देशबंधु कॉलेज के 70वें स्थापना दिवस पर इस महाविद्यालय के जितने पुरातन छात्र आए हैं, मैं महाविद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष होने के नाते सर्वप्रथम उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। किसी भी महाविद्यालय को प्रगति की श्रेणी के मापदंड पर देखने के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे पुराने छात्रों ने किस किस क्षेत्र में देश और विदेश में अग्रणीय काम किया है। मुझे बड़ा फक्र है कि हमारे महाविद्यालय के पुराने छात्र विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों को छू रहे हैं। आज कुछ हमारे पुराने छात्र प्रथम स्तर में थे, अब काफ़ी छात्र अब आए हैं पुराने हमारे। अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस महाविद्यालय का नाम देश विदेश में रोशन किया है। हम रोज़ आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि हम जितने हमारे पुराने छात्र आज आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे छात्र खेल जगत में, पुलिस सेवाओं में, मीडिया में, स्पोर्ट्स के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में बहुत हमारे छात्र ऐसे हैं जो उन्होंने देशबंधु कॉलेज का नाम रोशन किया है। उनमें से कुछ हमारे बीच में आज हैं, आप लोग उनको सुनेंगे। मैं सीधा ये चाहूँगा कि हम ज़्यादा बातें ना करके पहले कुछ लोगों का जो स्वागत करना वो करें और फिर उनमें से कुछ लोगों के विचार हम सुने। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, हमारा नाम रोशन हर एक प्रॉबेबल जो जगह हम सोच सकती थी वहाँ पे दे आर शाइनिंग ब्राइटली। प्रोफेसर अनिल राय प्लीज़। Please give me a moment here. Our Secretary Staff Council, Dr. Manisha Singer also, please kindly come up on the stage. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री आर्यवत्स जी, अध्यक्ष प्रबंध समिति, प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल जी, वर्षा बवेजा जी, कमल जी, गुलाटी मैम, आदित्य जी, और माफ़ कीजिएगा आपका नाम मुझे याद नहीं है। तो सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, आप सब, क्योंकि
जैसा कि पिछले सत्र में मैंने देखा था कि हमारे 2 अध्यापक भी इस सभागार में थे, आदरणीय श्री ओम प्रकाश कोहली जी और डॉक्टर शशि मेहरा जी। इसके साथ मैं और देख रहा हूँ कि मैं तो चूँकि हिंदी में था तो बहुत लोगों से ज़्यादा संवाद नहीं होता था, लेकिन नीलम मैडम है यहाँ पर हैं, चंद्रिका जी हैं। चंद्रिका मैडम तो उस समय बता रही थी एक बार मुझे कि 22 साल की ही थी जब इस कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो अब सब लोग जैसे जैसे कॉलेज अपने उम्र के पड़ाव पर आगे जा रहा है, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज का उस तरफ जाना प्रगति का सूचक है। 70 साल कॉलेज के पूरे हुए और आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ सुनी उसमें देखा आपने कि किस तरह से 3 अगस्त 1952 को इस कॉलेज की स्थापना केवल 72 छात्रों के माध्यम से की गई थी और अब इस समय कॉलेज में 5,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं और मैं समझता हूँ 200 से ऊपर तो अध्यापक होंगे और 50 के आसपास कर्मचारी होंगे। तो कॉलेज ने इन 70 सालों में बड़ी लंबी पारी खेली है और जैसा कि मैंने पिछले अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि 10 की गिनती में वो आए और उसके लिए और लोगों ने कहा कि वो 10 से भी और कम पे आए, 1 तक जाए, उसकी शुभाशंसा व्यक्त की गई थी। और एक बार और मुझे एक बात ये ज़रूर खलती है कि नैक में ये कॉलेज B++ है, तो मेरी ये शुभकामना होगी एक इस कॉलेज के एलुमनाई के रूप में, एक छात्र के रूप में, कि वो A++ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Sir has also been a part of our alumni, and that itself, the reason why he is here, and it makes us more and more proud. Professor Agarwal, please. Shri R.N. Vast ji, Honorable Chairman Governing Body Anil Rai ji, Sammanit Manch, our proud alumni, dear colleagues. जब हमने ये फाउंडेशन डे प्लान किया था तो बहुत आइडिया था नहीं, फिर पहला आइडिया कहाँ से आया कि वी शुड इनवाइट आवर एलुमनाई टू ए सेक्शन। जब मुझे बताया गया, हमने सर कभी ना 25 साल मनाए, ना 50 साल मनाए, ना 60 साल मनाए, और फिर एलुमनाई हमारे इतने थे कि डिसाइड करना मुश्किल हो गया हम किनको एक्नॉलेज करें, किनको हम इसके अंदर स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाएं। फिर यही सोचा गया कि हर एक फील्ड से जो जो बेस्ट थे वो भी, अब मीडिया से हमने प्रभु चावला जी को बुलाया, वो आईपी है यहाँ पर, रवीश जी को भी बुलाया, क्योंकि हमने फिर दोनों को ही उनको बुलाया था। रवीश का है कि वो आज आ नहीं पाएंगे क्योंकि शायद मंडे पूरा दिन उनका स्टूडियो में रहता है। ब्यूरोक्रेसी में देखा तो ब्यूरोक्रेसी में कम से कम 25-30 नाम तो हमने खोज लिए किसको बुलाया जाए। साइंटिस्ट में हमने देखा तो मालूम पड़ा लंबी लिस्ट थी जो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में थे, हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान से बाहर थे, भटनागर अवॉर्डीज़ थे और कौन कौन से थे। तो बड़ा मुश्किल सा हो गया था, लेकिन हमारी जो एक कमेटी थी उन्होंने फिर भी कहा कि सर स्टार्ट तो करते हैं, और ये डिस्क्रिशन उन्हीं का था कि किस किस को बुलाया जाए। तो जो जो आप इसमें आए हैं, आज यहाँ आए हैं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज को हम आगे कैसे बढ़ाएं। आप सब, क्योंकि अभी ये मौसम मानसून का चल रहा था तो हमने ये अंबेडकर सेंटर में रखा। एलुमनाई मीट हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो आप सब उसमें आइएगा, कॉलेज को देखिएगा, कॉलेज को एंजॉय कीजिएगा और अपने आइडियाज़ दीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा हमें किस किस रूप में सहायता आप कर सकते हैं। कई तरीके की सहायताएं होगी और मेरा विश्वास है, जैसा अनिल जी ने कहा, ठीक है ग्रेडिंग वगैरह, अभी भी अनिल जी मैं विश्वास दिलाता हूँ कॉलेज हमारा कहीं से कम नहीं है।
किसी भी लेवल पे कम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम नहीं है, इंटेलेक्ट में भी कम नहीं है, एकेडमिक्स में भी कम नहीं है। तो ग्रेडिंग तो हमारे को अपने आप अच्छी मिल ही जाएगी इसमें। मैं विश्वास भी दिलाता हूँ, जो नंबर गेम होता है वो भी हम जीतेंगे। तो पक्का तो क्योंकि जिसको कहते हैं दिखना भी चाहिए A++, तो A++ भी हम लेके आएंगे, क्योंकि उस तरफ हम बढ़ चुके हैं। और जिन्होंने भी एसेस किया है हमारे कॉलेज को, उन्होंने कहा है यू डिज़र्व A+ और A++। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अभी तो हम अपने एलुमनाइज को सुनना चाह रहे हैं, तो उन्हीं को सुनेंगे और कुछ उनके किस्से खट्टे मीठे होंगे वो हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Professor Kamal Kumar Gupta, please. Good afternoon, respected Dais, Governing Body Chairman, Honorable R.N. Bas, Governing Body Treasurer, Professor Anil Rai, Principal Deshbandhu College, Professor Rajiv Agrawal, Dr. Chandrika Gulati, convener of this program, Dr. Manisha Sanger, Secretary Staff Council, Dr. Aditya Saxena, IQAC coordinator, and Professor Varsha Babeja, social media champion, my senior colleagues, junior colleagues, teachers, respected students, welcome to this 70th Foundation Day celebration. It's a great day, and it's a moment of great pride for me to be part and witness this program. Let me confess one thing. This is the second session, and after every event, I feel that this is the climax. Nothing more can be happened. But still, second half is dedicated to the college alumni, and I feel that college alumni is the soul of an institution. I say the journey of 70 years, Deshbandhu College, 1952 to 22, a glorious journey with a glorious past, magnificent present, and I can assure a bright future. This journey was, in fact, added, polished, improvised, made by our committed teachers, capable administrators, supporting staff, but nothing is complete without the involvement of the students. And our institute is really proud that we are the institute with scholars, with students and committed students. You know, during lunch session, initially I was planning to go for a formal talk as a vice principal, but after interacting with my teachers, with my students, probably I also entered in my college days. Deshbandhu College is really committed to impart academic excellence in the students of all the social groups without any discrimination. The students from all over the country and adjoining countries come with a vision to get academic excellence. But in return, they not only get academics, they are educated, they are groomed, and this is the beauty of Deshbandhu College. Teacher-taught interaction is matchless in our college, unparalleled in our college. Here, students are not only taught, they are mentored. Right now, more than 20 societies are there where students can find out their hidden talent. They can really explore what they are envisioned for, what bring happiness to their life.
and in that way, they diversify in their career. Our alumni is a rich heritage of our college. If I say, right now I can say, if I turn back to my college days, a proud alumnus of Deshbandhu College. And what better you can explain on this dais right now, in the respected dais, at least 2 alumni are from Deshbandhu College, Professor Anil Rai and myself. So what a better moment can be witnessed for the glory of Deshbandhu College. If we see Deshbandhu College, alumni, academics, research, education, bureaucracy, politicians, policymakers, journalists, filmmaker, artist, defense personnel, corporate, entrepreneurs, and if I just keep speaking, list is endless. So that is the beauty of our alumni. We have a very, very rich tradition of alumni. Now, if I just talk about myself, my association with Deshbandhu College is 43 years. And 43 years, valuable 43 years. I joined Deshbandhu College in 1979 as a teenager, probably lost, not clear what my goals are. I just entered, and there I got an environment, my family or extended family. Here I can see Dr. Veena Bhatt. She was the person who brought a confidence in ourselves that yes, you can really do wonders. She could probably master us what our passions are, what our liking. And Professor Veena Bhatt is here, but at the same time, I like to name some other faculty members, Dr. B.P. Saxena, Dr. M.L. Gupta, Dr. Mrs. R. Shamla Subramanian, Dr. Kanta Sharma, Dr. Devendra Singh, and Dr. Ravi Kant. They really make us to identify ourselves. Otherwise, a teenager in 1979, not that smart, not that intelligent. They were clueless about their career, what they want. But that was the beauty. And I say 43 years, productive 43 years, experience 43 years. And I know some of my senior colleagues are also there, Dr. Shashi Mehram, Dr. Elizabeth, who are even senior to me and who have enjoyed the Deshbandhu College as a student, as a college. Madam, I want to take a liberty. Here, I want to say my experience with Deshbandhu College is maybe much more than a little bit. As a student, as a faculty, 32 years right now, I have completed as a faculty. Then researcher, more than 20 years, I'm in research with Deshbandhu College. And I have been also given additional responsibility of administration of vice principal. So I feel really proud and privileged to be part of this. I'll complete my talk by congratulating the Deshbandhu fraternity on this 70th Foundation Day. My best wishes to all of you. Thank you. Thank you so much, sir. Considering that our guests are in a hurry to leave, I think we will cut short the rest of the introductions that we would have loved to have. But let's invite Mr. Prabhu Chawla, please. Sir. We will be felicitating him, and I request our chairman, treasurer, principal, please. Dera Ghazi Khan, 2nd of October, started off as a student at Deshbandhu, economics lecturer, editorial director of New Indian Express, Padma Bhushan awardee, ITA awards for best anchor. What more can we say? Thank you so much, sir, and we would love to hear you share. Sir, the podium is all yours.
I'll speak both in Hindi and English because I'm a journalist in both the languages. श्रीवास चेयरमैन साहब, डॉक्टर अग्रवाल प्रिंसिपल और स्टेज पर बाकी जितने महानुभाव हैं और कॉलेज के छात्र छात्राएं, टीचर्स, सबको मेरा नमस्कार। मैं देशबंधु छात्र कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को याद किया। आज से कुछ 10 साल पहले भी मेरे को याद किया था, किसी प्रिंसिपल का नाम मेरे को भूल गया। मैं वहाँ पर एक बार लेक्चर देने के लिए गया था, इनकी इकोनॉमी मतलब इंडिया टुडे में काम करता था, तब मैं वहाँ पर गया था। देशबंधु कॉलेज की अपनी एक हिस्ट्री है जो आप सब लोग जानते हैं। जो कुछ आज मैं हूँ, क्योंकि मेरी पहले इंग्लिश लिखने की शुरुआत देशबंधु कॉलेज से हुई थी, तो आई एम प्राउड ऑफ इट व्हाट देशबंधु टॉट। क्योंकि मैं एक मिडनाइट चिल्ड्रन हूँ, जैसे किसी ने बताया, रिफ्यूजी था, जमुना पार झिलमिल कॉलोनी एक जगह है, वहाँ रहता था। कोई फॉर्मल एजुकेशन मेरी हुई नहीं थी, बिकॉज लाइक ए रिफ्यूजी वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Me and my 7 sisters and brothers came from Dera Ghazi Khan to Jalandhar refugee camp. From there we were pushed out to Agra, then we pushed out to Faridabad, then somewhere else. So I did my what you call primary education in Agra, middle education in Delhi, Punjab matric sitting at home, intermediate in Ghaziabad, and I ended up in Deshbandhu College in 1963 as the economics honors student in second year. And that was the English medium. For me, it was a cultural change, cultural shock as well, coming from a lower middle class family. And I was the first child in my family to go to a college. So I didn't know what college meant. पजामा पहन के चल जाते थे, उस वक्त कुछ बस में आते थे, DTC की बस होती थी, जमुना पार से वहाँ तक जाने में 1-1.5 घंटा लगता था। कंपटीशन बहुत था कि मैं एक लड़का जमुना पार से आता है, उसको कुछ पता नहीं है, पर दिल में कुछ तमन्ना थी कि करना है। इस कॉलेज में आए हैं, ठीक है, एडमिशन यहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू जितने मार्क्स थे उस हिसाब से कैंपस की तरफ मेरे को पता भी नहीं था कैसे जाना है। घर में कोई ऐसा आदमी भी नहीं था, कोई गॉडफादर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, देयर वाज नन टू गाइड मी वेयर टू गो। मैं अपना बस्ता उठा के सर्टिफिकेट लेके कॉलेज में पहुंच गया। तो वहाँ मेरे को डॉक्टर अम्बा प्रसाद, उस हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनसे मिला। उन्होंने क्या करना चाहते हो बेटा? मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, कॉलेज में पहला हूँ, जहाँ एडमिशन दे दो कि मैं कर लूँगा। दैट वाज इंटरमीडिएट कि आई वाज इंटरमीडिएट, उस वक्त लॉ होता था, इंटरमीडिएट मैंने किया था, तो मेरे को उन्होंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया। उस वक्त सेकेंड ईयर एडमिशन डायरेक्ट हो जाता था, फर्स्ट ईयर नहीं था। आई वाज परहैप्स द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। SP कपूर हमारे उस वक्त इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, 2-3 अच्छे टीचर भी थे। क्योंकि गरीब घर से आते थे, बस में आता था, तो वहाँ पर NCC होती थी उस ज़माने में। अब NCC शायद है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। तो लगता था कि भूख लगती है, पैसे थे नहीं जेब में, तो शाम को NCC में रुकते थे, क्योंकि वहाँ एक समोसा भी मिलता था, ब्रेड पकौड़ा मिलता था, तो हम खाने के लिए वहाँ रुक जाते थे। तो एक लालच था, एक तो डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि खाना घर से थोड़ा बहुत लाया, कहीं कैंटीन के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हम जाके शाम को NCC करके शाम के 7 बजे घर जाके पहुँचते थे। पढ़ना शुरू किया, और हमारे टीचर बहुत अच्छे थे। SP कपूर साहब, उनको लगा कि ये लड़का मेहनत करना चाहता है, रेफ्यूजी है, पंजाबी है, कुछ करना चाहेगा, तो कभी कभी वो घर में बुला करके मेरे को दोपहर के बाद ले जाते, चलो खाना मेरे साथ खाइए। मेरे को पढ़ाया उन्होंने, काफ़ी क्लासेस उन्होंने मेरे को अपने घर में पढ़ाई, जिससे मेरे को इंग्लिश में लिखना थोड़ा बहुत आ गया। मैं इंग्लिश का जर्नलिस्ट बनूंगा ये मेरे सपने में भी नहीं था, कि वो भी इंग्लिश सबसे बड़ी मैगजीन का एडिटर बनूंगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो देशबंधु कॉलेज की जो एक फाउंडेशन मेरे में पड़ी थी, शायद उसके अंदर कुछ होगा ऐसा गुल कि उसने बना दिया मेरे को इंडिया टुडे का एडिटर। देशबंधु कॉलेज में मैंने कोई ये सीखा होगा कि मैं आज तक का सबसे बड़ा एंकर बन गया, और मेरी सीधी बात सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो हो गया उस वक्त। तो एक भावनाएं होती हैं, एक अपने अंदर फाउंडेशन होती है, ये संस्कार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यू ग्रो एंड इट गिव्स यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो देशबंधु कॉलेज के अंदर जो कुछ सीखा कि सब आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तरफ से आते थे, और आसपास के लगे कि बदनाम कॉलेज होता था उस वक्त की, जब कहाँ कालका जी के अंदर कॉलेज है, कहाँ किस तरह का है, तो हम भी चलता है। तभी बात हो रही थी कि आपको
ग्रेड बढ़ाने, हम A+ में भी B+ में आएंगे। एज ए स्टूडेंट, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए टीचर, आई टॉट इकोनॉमिक्स 11 ईयर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं टीचर भी रहा, विद्यार्थी परिषद का मैं प्रेसिडेंट भी था, और देशबंधु कॉलेज कई ऐसे छात्र भी हैं, अशोक टंडन का नाम पर हमने सोचा होगा, उन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरुण जेटली जब हमने बनाया था प्रेसिडेंट, वो देशबंधु कॉलेज के लोगों ने बनाया था उनको। अशोक टंडन उस कमेटी के मेंबर थे और मैं अध्यक्ष था विद्यार्थी परिषद का। जब अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने और मेरी कार्यकारिणी के अंदर वो सदस्य थे, मैंने उस पर विद्यार्थी परिषद छोड़ दी 1975 के अंदर। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई, तो मैं डर के मारे छुप गया। तो मैं, जेटली साहब मेरे साथ थे, जितने इमरजेंसी लगी थी उस दिन हम दोनों, मैं जेटली साहब के घर में रुका था रात को, बिकॉज आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। कोहली जी प्रेसिडेंट थे जो इस वक्त है, मैं उनको रिप्लेस किया था प्रेसिडेंट, फिर वो प्रेसिडेंट बन गया, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया। इस तरह का सिस्टम होता है। तो इमरजेंसी जिस दिन लगी थी उससे पहले जब जयप्रकाश नारायण जी का लेक्चर हुआ था वहाँ पर रामलीला ग्राउंड में, मैं और जेटली साहब वहाँ थे। मैंने जेटली साहब के घर गया, मैं जमुना पार रहता था, तो रात को मैं वहीं रुक गया। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी तब। सुबह पुलिस वाले मेरे घर गए ढूंढते हुए, उनके घर नहीं आए, तो दोनों ही हम अरेस्ट हो जाते नहीं थे। उनके घर नहीं आए क्योंकि उनकी लिस्ट में नाम उनका हो कि नए थे, वो उनका संबंध ज़्यादा था ही ना। मैं उनको स्कूटर पर बैठा करके ले गया यूनिवर्सिटी कैंपस के कि चलो एफिजी जलाएंगे हम मिसेस गांधी की। तो हम पहुँच गए प्रदर्शन करने के लिए। मैं स्कूटर पर था, आई वॉज टीचिंग इन श्रद्धानंद कॉलेज दैट टाइम। इट रियली वॉज, अरुण वॉज क्वाइट टॉल, 6 feet above, हैंडसम गाय। क्योंकि मेरी विद्यार्थी तो उससे पहले वो शायद लेफ्टिस्ट थे, नक्सलाइट थे। मैं उनके विद्यार्थी बस में लेकर के आया, विजय गोल के घर में छोड़ा, वो दोनों गए। मैंने वहाँ देखा जा करके, मैं इसलिए किस्सा बता रहा हूँ क्या हुआ। जब वो प्रदर्शन करने लगे तो उनको पुलिस ने सारी तरफ से घेर लिया, भागने की कोशिश की, काफ़ी हैवी थे, भाग नहीं पाए, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जेटली साहब तिहाड़ जेल पहुँच गए, मैं भाग गया और मैं एडिटर बन गया, वो मंत्री बन गए। तो अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे। बीजेपी का कंट्रीब्यूशन अगर किसी इंटेलेक्चुअल थोड़ा बिना भी कंट्रीब्यूशन है कि बीजेपी को इतना अच्छा नेता ला करके हमने दिया कि उनके खिलाफ काफ़ी ऑपोजिशन आकर थी। तो कंट्रीब्यूशन किसका हुआ? देशबंधु कॉलेज हुआ। कोहली जी भी थे उसके अंदर। कोहली जी उस कमेटी सिलेक्शन जिसने चुना था दूसरा प्रेसिडेंट, उसके अंदर कोहली जी भी थे, अशोक टंडन भी थे, मैं भी था। 4 लोगों की कमेटी थी, 3 देशबंधु कॉलेज के लोग थे उसके अंदर। तो इसलिए देशबंधु कॉलेज छुप के काम करता है। यानी विजिबिलिटी जो है देशबंधु कॉलेज की वो ज़्यादा अच्छी है। एडवांटेज अब करें कि रैंकिंग की बात करिए, मैं रैंकिंग विश्वास नहीं करता। रैंकिंग जिस तरह से बनाई, इंडेक्सिंग जो है एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, चलता हर जगह इंडेक्स। नीति आयोग के बारे में कहता हूँ, ये नीति आयोग जो इंडेक्स कंपनी है, रोज़ नया इंडेक्स बनाती है। उसमें पैरामीटर्स क्या किसी को पता नहीं है, कहाँ से लाती हैं। जो अमेरिकन के इंडेक्स के पैरामीटर, उसको आप इंडिया पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो देशबंधु कॉलेज 100 साल में भी नहीं आएगा। तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करने के, जो कहा गया कि क्या करना चाहिए। देशबंधु कॉलेज सफ़र फ्रॉम 2 डिफरेंट आई वुड से डिसेबिलिटीज। One is the locational disadvantage. देशबंधु कॉलेज 1953 के अंदर बना, देशबंधु के नाम से बना, परंतु क्योंकि एक रिफ्यूजी कॉलोनी कालका जी के अंदर जाकर के बना, एक कोने के अंदर सेंटर में नहीं बना, कैंपस का पार्ट नहीं था, नॉर्थ के ऐसी जगह साउथ दिल्ली में नहीं था, उसकी वजह से वहाँ अच्छे लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उससे 2 किलोमीटर पहले LSR है, जो आज भी रैंकिंग में सबसे आता है, वो लड़कियों का कॉलेज है। और मैं जो कॉलेज में पढ़ता था वहाँ जाके खड़ा रहता देखने के लिए पूछा है। ये जो लोकेशन कालका जी रिफ्यूजी कॉलोनी के जहाँ पर के कॉलेज बनना, उसकी वजह से लोकेशन डिसएडवांटेज जब हो जाता है, उसको आप कैसे कवर करेंगे? सेंट स्टीफन कॉलेज कैंपस के अंदर है, उसको जब रैंकिंग करने वाले लोग जो हैं, उनमें से कुछ लोग सेंट स्टीफन कॉलेज के होंगे उसके अंदर मेंबर जरूर, या हिंदू कॉलेज के होंगे, उनका कॉम्पोजिशन क्या है वो भी देखने की बात है। तो डोंट बॉदर अबाउट द रैंकिंग्स। लोकेशनल डिसएडवांटेज जो आपका है, उसको आप कंपनसेट कैसे करेंगे? कि हम कालका जी के अंदर हैं, कालका जी मीन्स वेयर, तो इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंपस इन दैट पार्ट ऑफ साउथ कैंपस, इज नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ कैंपस। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है कि ओनरशिप पैटर्न, मैनेजमेंट पैटर्न, कि जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, श्रीराम कॉलेज है, उनका मैनेजमेंट जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहे, हिंदू कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज की मैनेजमेंट ओनरशिप बड़ी सरकारी टाइप थी।
सरकारी टाइप में जो ग्रोथ होना चाहिए कि पानी का कप भी लाना है या कॉफ़ी भी खरीदनी है टेबल की, उसके लिए कोटेशन बुलाएंगे 5 बार आप, तो कहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा? तो यू आर द बेस्ट, बट यू आर नॉट डिलीवर द बेस्ट बिकॉज यू आर बाउंड बाय सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी रूल्स एंड व्हाटनॉट। आज मैं देख रहा था क्या बढ़िया यहाँ डेकोरेशन जो किया आपने, जो वीडियो दिखाया। आई एम ए स्टूडेंट जर्नलिस्ट, आई एम टॉट जर्नलिज्म। जो क्रिएटिविटी आपकी टीम ने आज मेरे को दिखाई है, ये सेंट स्टीफन कॉलेज के लड़कों को नहीं आती। उस दिन तीन बच्चे मेरे इंटरव्यू करने के लिए आए थे। आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद देम। मैंने टीवी चैनल भी चलाया है, मैंने अखबार भी चलाया है। द वे दे वर थिंकिंग, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो देशबंधु कॉलेज में कुछ तो है, तो जिसको आपको उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। कहाँ से कहाँ आ गए हम, इसकी कहानी लिखनी होगी आप लोगों की। यात्रा 1953 से लेकर के 2022 की 70 साल की यात्रा में देशबंधु कॉलेज अपनी मार्केटिंग टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यू आर गोल्ड बट यू आर बीइंग सोल्ड एज सिल्वर। You should be sold at diamond because those who are silver, they are being sold at diamond because they can market themselves. अब सेंट स्टीफन कॉलेज के लोग पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर बैठते हैं, आइए सबसे ज़्यादा बन जाते हैं, फिर वो मार्केटिंग करते हैं, फिर एडमिशन करते हैं। हिंदू कॉलेज के लोग मिनिस्टर कहीं बन जाते हैं। हरदीप पुरी मेरे यहाँ विद्यार्थी परिषद में साथ था, एक मिनिस्टर ना हो। पर क्वेश्चन राइजेस कि व्हाई कांट यू मार्केट योरसेल्फ? सेंट स्टीफन कॉलेज में टॉप स्टूडेंट जाएंगे, वहाँ से टॉप आकर अगर 100% वहाँ लोग 100% वाले जाते हैं, निकलते वहाँ पर 100% लेकर के केवल 50% हैं, तो योर वैल्यू एडिशन टू द स्टूडेंट इज 0। यू आर माइनसिंग। 100% लोग 100% लेकर के आए, निकले 50% लेकर के, तो आपने वैल्यू कम कर दी। आपके यहाँ तो 50% फर्स्ट क्लास आते हैं, आप 70% प्रोड्यूस करके भेजते हैं। यू आर कोडिंग मच मोर। Value addition by Deshbandhu College in terms of quality of education, producing better students than they get, is extraordinary. You must market that, which you are not doing. जो आज आपने किया, ये 10 साल पहले करना चाहिए था। इसको हर साल करना चाहिए था। आपके स्टूडेंट्स हैं, मैं 10 साल पहले गया, मैं किस लिए शिकायत कर रहा हूँ, 10 साल पहले मैं गया था, मैंने कुछ कहा था कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर जो भी फर्स्ट आएगा आपकी कॉलेज से, मैं उसके लिए गोल्ड मेडल दूंगा। अपनी आई विल स्पेंड द मनी बिकॉज़ आई कैन अफोर्ड, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। उसको फॉलो भी नहीं किया किसी ने मेरे साथ। ऐसे स्टूडेंट बहुत होंगे। आई एम अगेन अनाउंसिंग हियर, एनी स्टूडेंट हू टॉप्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स देशबंधु कॉलेज, आई विल गिव हिम ए गोल्ड मेडल इन माय मदर्स नेम। यू कैन टेक इट फ्रॉम टुडे। I'll give another gold medal, announce a second for the girl best college, जो टॉपर होगी कॉलेज के अंदर किसी भी कोर्स में आप डिसाइड कर, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। A girl will get another gold medal. तो अपने आप को आप जो भी कॉस्ट आती है आप मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो उसको बनाकर जैसा भी बनाना है आपको बता दूंगा क्या बजट है आपके पास। तो what I'm saying, you must learn to market yourself because you cannot change your geography, you cannot change your ownership, बट यू कैन डू मच मोर क्रिएटिविटी एंड उसको प्रोजेक्ट करिए। आपके अंदर बहुत कुछ है, यू आर नॉट यूजिंग, यू आर अंडर यूटिलाइजिंग, यू आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, मस्ट एक्सप्लॉइट इट, यू विल बिकम बेटर देन द बेस्ट, आई कैन अश्योर यू दैट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. It's raining golds and diamonds. Diamond sir ने हमें declare कर ही दिया, gold medals और 2 भी मिल रहे हैं. I think we are like done for today. It was worth all the effort. Thank you, sir. And we also understand why the raconteur is the journalist today. We also have with us Shri Gyanesh Bharti ji, the Commissioner of MCG. If you can kindly come up, sir. We would like to felicitate you. Please. He's a 1998 batch AGMUT cadre, and he's been the commissioner of South and East zones initially.
Thank you so much. Sir, we'd like to invite you also to speak, please. Respected Sri R.N. Vatsji, Chairman, Governing Body, my friend and Principal of the college, Professor Rajiv Agrawal, all the distinguished faculty members who are on the dais, off the dais, all the dear students, all the distinguished alumni, a very good afternoon to all of you. It is really a very proud moment for me to be with all of you on this auspicious occasion. As we all know, today we all are here to celebrate the 70th Foundation Day of the college, which is one of the prestigious institutions in University of Delhi. And I'm really feeling privileged to be part of this institution. This college has really achieved excellence in providing talented nation builders. Friends, as we all know, and since morning this must be discussed, this college, which probably was set up, this was set up in 1952, and at that time it started with only 72 students. But today it is imparting education with excellence to more than 5,500 students per year in a plethora of undergraduate and PG courses. This college has been a treasure of knowledge for me, and I really cherish each and every moment which I spent here. Many major lessons of life, which is beyond the defined syllabus of lessons and scripted books, are taught here by then professors. In fact, today I just saw Madam Usawara also, who taught me, and I really feeling nostalgic, of course, at that time when I joined the college almost 32 years back. So I really thank and congratulate the teaching faculty for their dedication, for inspiring, motivating, and nurturing the future citizen of the country. Friend, I joined this college about 32 years back. I really feel honored and privileged to be part of the legacy of this college. Whatever academic and professional accomplishment which I have today, this credit go to the college. I pursued my graduation and after completing my graduation here, then I did my post-graduation from Hindu College, and later on I did MBA also from FMS University of Delhi. Friends, when I joined this college in the year 1990, it was full of turmoil because that Mandal Commission agitation was going on. And at that time, I was living almost 25 kilometers away from the college, somewhere near the North Campus. And every day I used to travel about 50 kilometers, coming DTC buses, coming to the college, attending classes, going back to the campus, North Campus, where I was staying. It was really a tough time. But friends, thanks to then faculty members, especially because I was pursuing maths honors, my mathematics teachers, then principals, I believe he is no more, Mr. Balveer Singh ji. And I really utilized the services of library a lot. I used to spend a lot of time in library in those days because it's really a tough time. And whatever I am today, the toughness, the challenges which I faced in those times, it's really made me very tough. And whatever accomplishment which I am today, this credit goes to the college. Friends, the college is, whatever is today is mainly on account of the faculty, which is epitome of strength and pillar of support. With their blessings, I could accomplish my dream, and of course I became an IAS officer, and I served in various capacity in Government of India and different parts of the country. On this occasion, I'll request all my dear students who are part and parcel of the college to follow the motto of the college, Karmanya Vadhikaraste. Every day we should try to do a little bit better than what we did yesterday. Each step you take every day will move you closer to your goal. Just stay focused and be diligent. At the last, I'd like to thank my friend and colleague, Professor Rajiv Agrawal,
all teaching faculties, and all college staff who remembered me today and gave this opportunity to be once again with all of you. I'm really grateful to you. I'm really grateful to you. Thank you. Thank you so much, sir. It's amazing to have all these old people talk about their old teachers and their experiences that they've had in college. ऐसा ही एक जब हम देश मैगजीन में से ढूंढ रहे थे अपनी आज की पुस्तिका कमेमोरेटिव बुक बनाने के लिए, तो एक स्लिप मिली थी उसमें जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। 1964 वाली देश की मैगजीन में हमें ये मिली थी। वो आज हमारे साथ प्रोफेसर N.K. कौशिक हैं, 1964 बैच, एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर प्रेम भार्गव, BSc 1964. He is retired from Hindustan Times. Sir, are you here? Sir, I would like you to throw light on that. Please, आइए sir. We'd love to felicitate you. Please come up on stage. वैसे तो बहुत सारी यादें होती हैं कॉलेज के ज़माने की, लेकिन कॉलेज एडमिशन के टाइम की एक बड़ी बात मजाक सुनाता हूँ आपको। साइंस की थी, कमर्शियल स्कूल दरियागंज से, और उस ज़माने में साइंस का मतलब इंजीनियरिंग का था, तो ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, डायरेक्ट IIT रुड़की में मिलने का चांस नहीं था। इत्तेफाक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीनेट के मेंबर हमारे मामा होते थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी कि भाई प्लीज़ हेल्प। हम अलीगढ़ चले गए, उन्होंने कहा आपको इंटरमीडिएट में दाखिला देंगे, यू विल बी ट्रीटेड एज लोकल कैंडिडेट। एडमिशन ले लिया, फॉर्म भर दिया, मतलब सब कुछ। शाम को पता लगा कि इंटरमीडिएट में उर्दू पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, कैंपस से बाहर जाएंगे तो अलीगढ़ी पजामा और अचकन जिसके कॉलर पे यूनिवर्सिटी का निशान होगा। भाई जो उम्र थी, स्कूल में यूनिफॉर्म पे 2-4 बार पंगा हुआ, संस्कृत ज़बरदस्ती पढ़ी जितनी पढ़नी थी, तो उर्दू पढ़ेंगे भाई नहीं, दिल्ली आ गए वापस। लेकिन अलीगढ़ के ख्वाब में दिल्ली में कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस भी नहीं लिए थे, डेट निकल चुकी थी, डेट निकल गई। अब क्या करें? आप लोगों, पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा, जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज कहलाता था, प्रिंसिपल थे MM बेग, मिर्ज़ा महमूद बेग, और पर्सनैलिटी में उनकी वाइस चांसलर से ऊपर पर्सनैलिटी थी। वो लाल कुएं हमजा दबान खाने के बराबर रहते थे। तुम्हारे फादर ने कहा, मैंने कहा बेग साहब के कॉलेज में A ग्रुप नहीं है। कहेंगे उनके बराबर एक खान साहब हैं, अजमेर के माय कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, उन पे जाओ। उस वक्त पुराने लोग जानते होंगे, AN बनर्जी प्रिंसिपल थे देशबंधु कॉलेज के, सन 60 में। उन्होंने घर से फ़ोन किया, बनर्जी भाई मेरा बेटा है BSc में दाखिला लेना है।
कल फॉर्म लेके डेट निकल चुकी है, आज ही भेजो, फोटो फॉर्म सब अटैच करा के। चले गए हम कॉलेज से, उन्होंने क्लर्क से फॉर्म मंगवाया, भरा, प्रिंसिपल रूम में जो बैठने का टाइम था, सब भाई जमा कराओ। मैंने कहा सर कल जमा कराऊंगा। खान साहब ने सिफारिश की है, नखरे कर रहे हो, कल जमा कराओगे, डेट निकल गई है। मैंने कहा साहब चावड़ी बाज़ार आने जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे क्यों चावड़ी बाज़ार? सब फॉर्म पे फादर के दस्तखत कराने हैं। तो जो मैं क्लाइमेक्स बता रहा हूँ, बनर्जी साहब ने कहा कॉलेज में दाखिला लेने आ गए हो, फादर के दस्तखत नहीं कर सकते? तो और बात भूलूं ना भूलूं, ये तो नहीं भूल सकता। अब मैं उनसे कैसे कहता कि स्कूल में भी कई बार किए थे। तो साहब मैं और कुछ नहीं सुनाऊंगा, यही बड़ी बात है जो वाकई नहीं भूल सकता, और शायद आप भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Don't need to say more. There are things we need to learn before we come to college also. Okay, so Shri Ramveer Singh Bhiduri ji, if you are there with us, would request if you could please come up. Nahi hai? Okay. We have Dr. Hanif Qureshi, IPS, Commissioner of Police. Sir, we had the pleasure of listening to you even on the annual day this time. He's also the Secretary, New and Renewable Energy of the Government of Haryana. Welcome, sir. Please आइए. We must listen to you. President of the governing body, Shri R.N. Vats, and members of the governing body, principal and faculty of the Deshbandhu College, dear students and my fellow alumni, आज मैं बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर आकर मुझे आपने बुलाया है और इतना भव्य समारोह आपने किया है। कॉलेज के इतिहास और इसके कल्चर के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ कि एक बहुत बड़ी फैमिली का मैं पार्ट हूँ, और जो एक्सपीरियंसेस, जो संस्कार, जो बातें कॉलेज में मिली, उनका मेरी आगे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा उसके अंदर। जैसे अभी प्रभु चावला जी जिक्र कर रहे थे कि कितने खूबसूरत फूल आपने लगाए हैं, तो एक शायर ने कहा है कि एक जो गुलदस्ता होता है, जो बगीचा होता है, उसमें अलग अलग तरह के रंगों और खुशबुओं से वो उसकी सुंदरता आती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये जो फैमिली और ये जो रिलेशनशिप्स हैं, मुझे लगता है ये मैंने देशबंधु कॉलेज से सीखा है। 87 के अंदर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, बीएससी फिज़िक्स में, और उस वक्त जैसे अब नए स्कूल से निकलते हैं तो कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो मैं पैशन की जिक्र कर रहा हूँ, हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे मिस्टर ऑल, और
मतलब क्या पढ़ाते थे वो, मतलब इतने पैशनेट थे, अपने मैथमेटिकल फिजिक्स था और क्या एक देखा जाए तो बोर तरह का सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें इतने वो इन्वॉल्व हो जाते थे, ऐसा हमारा इंटरेस्ट उसमें उन्होंने क्रिएट कर दिया कि जब बाद में मैंने सिविल सर्विस जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने फिज़िक्स अपना ऑप्शनल रखा और फिज़िक्स के मार्क्स की वजह से ही मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि ठीक है रेटिंग वगैरह भी, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो पैशन है, जो वो फीलिंग्स हैं, उनको मेजर नहीं किया जा सकता, वो एक पैमाने से अलग हैं। जैसे बाद में मैंने एमबीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से, फिर मैंने पीएचडी किया क्रिमिनोलॉजी में, वहीं सिंसिनाटी से ही मैं 3-4 साल वहाँ रहा। तो उसमें हम जैसे क्राइम नंबर्स पे रिसर्च करते हैं, तो उसी में एक फियर ऑफ क्राइम भी मेजर किया जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज फियर ऑफ क्राइम डिपेंड। तो अब क्राइम के तो नंबर्स हैं, अब फियर ऑफ क्राइम जैसे हम 1 to 10 के स्केल पर मेजर करते हैं। लेकिन एक हमारी प्रोफेसर हैं बॉनी फिशर वहाँ पे सिंसिनाटी में, उन्होंने अपने किस्सा सुनाया जब वो न्यूयॉर्क में एक लोकल ट्रेन में जा रही थी एंड शी वाज अलोन एंड शी वाज सराउंडेड बाय 3 or 4 बॉयज़ और उनके हाथ में पीएचडी का थीसिस था। तो जब उनको ये लगा कि दोज बॉयज़ वर नॉट आफ्टर द थीसिस बट आफ्टर समथिंग एल्स, तो उन्होंने कहा माई फियर वॉज 0 to 10 नहीं, आई वॉज एट 100। तो यू कैनॉट मेजर दैट, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैनॉट बी मेजर्ड। और मुझे लगता है कि जो माहौल हमें देशबंधु कॉलेज में मुझे मिला एकेडमिक्स का और अपनी फैकल्टी से अपनत्व का, वो माहौल को मेजर नहीं किया जा सकता। और तो इसीलिए जब भी मैं जहाँ जाता हूँ तो बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं देशबंधु कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहती है। और मैं अभी तो कमिश्नर ऑफ पुलिस पंचकुला पोस्टेड हूँ मैं, कुछ दिन पहले मैं सीपी फरीदाबाद पोस्टेड था। तो वहाँ पर भी, क्योंकि देखिए कि जो सक्सेस है वो रिलेशनशिप से आती है, वो लोगों से एक दूसरे से टीम वर्क में सक्सेस है। अभी इंडिविजुअली कोई सक्सेस नहीं हो सकती, इट ऑल डिपेंड्स द सीनियर व्हेन यू अचीव सक्सेस और व्हेन यू वांट टू गेन हाइट्स, यू हैव टू वर्क एज ए टीम एंड यू वर्क विद डिफरेंट पीपल। और यही मैसेज मैं अपने पुलिसमैन को हर जगह देता हूँ कि आप सिटीजन्स से आप कनेक्ट अपना बढ़ाइए, उनकी पावर को अपनी पावर बनाइए और अपनी पावर को उनकी पावर बनाइए। उसके बाद देखिए कि कैसे लोग आपको प्यार करते हैं और आपके सक्सेस अचीव हो जाती है। तो इस तरह के लेसन्स भी हमें देशबंधु कॉलेज से मिले हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने उन दिनों को याद करता हूं। और आज यहाँ पे बुलाने के लिए भी मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। एंड एक आपने बात और कही है कि आगे कॉलेज को कैसे ले जाना है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी एलुमनी बहुत से डिफरेंट फील्ड्स में हैं, उनको आप ज़रूर आप इस्तेमाल करिए उनको। और हमने पुलिस डिपार्टमेंट में कई इंटर्नशिप्स हम चलाते हैं, कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम चलाते हैं, उन सब के अंदर वी वुड लव टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। चाहे वो पीछे हमने एक चलाया था कि जो अपने साइबर क्राइम यूनिट में हमने अपने लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ पार्टनरशिप किया था। हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो विंग है उसमें जो वुमेन स्टडीज़ का हमने उसमें किया था। फिर जो डिप्लॉयमेंट है, एचआर मैनेजमेंट है, उस बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, तो वी कैन थिंक अबाउट दैट। और बहुत अच्छा रहेगा अगर ये एसोसिएशन जो आपने इतना सुंदर ख्याल आपने जाहिर किया है, इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। माय बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. That gives us another little opportunity to have more association, I think, in so many ways possible. Thank you so much, sir. We also have with us Professor Debjani Ray. She's the head entomology division of IARI. Ma'am, we welcome you. So glad to have you with us, and we'd like to felicitate you.
respected dignitaries on the dais, off the dais, alumnus, students, and of course, dear faculty. I really feel very privileged to be here today. Dr. Kamal, a special friend, he was 1 year senior to me, and our association has always been there. He has been very kind, always calling me, Debjani, you come. And for all the functions, he has been asking me to come. Sometimes it is possible, sometimes not. Today also was a very hectic day for me, but when he took the names of a few of my teachers who are here, I just couldn't resist. So I came. So it was nice. Now I'll talk to Madam. And when I took admission here, I am a 1983 pass out. So 80, when I was here, like two of us, very close friends, next door neighbors. So our parents, they decided, North Campus bahut dur hai. You take admission and you study here only. So I was in zoology and she was in botany. So initially, it was, somehow there was always a fear. Ye buses rowdy hai, thoda sa, wahan pe students and all those things. But once I entered the college, it was a totally different experience. It was, no such feeling was there. And those 3 years were really extremely good. I still remember Dr. M.L. Gupta, Dr. Saxena, and Madam Veena is here, and so many very good teachers. In fact, teachers strike, maybe I remember, Dr. M.L. Gupta used to call us, और zoology department के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ के हम classes करते थे. That was also like हमको कभी-कभी लगता था कि other students are all at home, but we are here. So he used to tell us. And somehow the subjects he taught, entomology, I was so fascinated, maybe because of the way he taught and the way he passed on everything he knew to us. So I was fascinated with the subject, and somehow fate had it that I continued with that subject only. So after my MSc at Miranda, I joined IARI Pusa Institute first as a student, and then through ARS, the service we have, I joined there as a scientist. So ever since then, I have been there. And of course, I don't leave any opportunity of coming and meeting the students here in zoology. And last year, when we had the online alumnus meet, it was an eye-opener. I never thought that all the fields have students of Deshbandhu. And it was really great of Dr. Kamal to have organized that. He took a lot of pains, and it was really great. So the students, I am there at Division of Entomology, Pusa Institute. Any help you need. And as my, just the person, Dr. Sir was telling, we also have a lot of internships there. And students can take advantage of the labs we are having and the experts we are having. You are all welcome to do small 1 month, 2 month, 3 month internship in the division. And anytime you want, you can come. We are all there. So just a few words, because all the earlier speakers were very good orators, and I am nowhere near them. So I'll just say thank you, everybody, for calling me, and I'll take leave. Thank you. Thank you so much, ma'am. You were a lovely orator. It was great listening to you also. And let me also share with you that I had somebody in my near my place who is also an IRI, and I asked her about internships that my students, science students can take, and she refused. So now I know what Deshbandhu alumni can do. Thanks so much for making that offer to us. We have Kavya Kumar here, 1979 BCom Honours batch. Wow. Thank God, after all those sciences, sir, we have somebody from commerce as well. You're welcome. Has been a part of Doordarshan, continues to direct films, started the Dramatic Society in Deshbandhu College, and also invited Mr. Pankaj Kapoor at that time. You're welcome, sir.
मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सज्जन पुरुष, मेरे बहुत ही दिल के करीब मेरे रिस्पेक्टेड, जिनको मैं प्यार भी करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा भी है, डॉक्टर सचदेवा मेरे लेक्चरर यहाँ इस समय मौजूद हैं। और एक बड़ा ख़ास रिश्ता आपके कॉलेज से हो जाता है जब आप स्कूल से बाहर आते हैं। एक ख़ास किस्म की आपको एक आज़ादी मिलती है कि अभी हमको कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने क्लास में भाई कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, और आप क्लास से गायब भी हो जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। ये प्रॉक्सी नाम की जो चीज़ होती है, बंक, ये इससे परिचय आपका कॉलेज में जाके होता है कि आप अर्चना पे फिल्म देखने जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ और पीछे से बोल दिया गया कि भाई यस सर बोल देना। अच्छा, ये काम बड़ा आसानी से हो जाता था, सिर्फ एक ब्रेड पकौड़ा खर्च होता था। और उस समय ओल्ड बिल्डिंग थी पीले कलर की, और इसका जो गेट था वो उस तरफ रोड की तरफ था, और हम बाहर जो है वो एक 25 पैसे का 2 ब्रेड और बीच में समोसा, ये बहुत बड़ा हमारा प्लान होता था कि ये करना है काम। तो मेरा शुरू से थोड़ा ड्रामा में, प्लेज में, स्कूल में भी मेरा इंटरेस्ट रहा। तो देशबंधु में जब आया तो इस तरह की कोई एक्टिविटी थी नहीं। वहाँ पर एक मिसिज़ वीना सेठी होती थी, हमारी इंग्लिश की लेक्चरर, उनके साथ बात हुई मेरी और कुछ डिस्कस हुआ। तो ड्रामेटिक सोसाइटी का प्लान बना और मैंने एक इंग्लिश ऑनर्स की क्लास थी, उसके अंदर जाके मैंने पहली बार ड्रामेटिक सोसाइटी का हमने प्लान बनाया, और ड्रामेटिक सोसाइटी देशबंधु कॉलेज की 78 में स्टार्ट हुई। और मैं उस समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ प्लेस कर रहा था, थिएटर भी कर रहा था, और बीकॉम ऑनर्स में मैं यहाँ था देशबंधु कॉलेज में। तो मैं कॉलेज के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाता था, प्लेस करता था और कॉलेज भी कर रहा था। तो मेरे पंकज कपूर जो फिल्म एक्टर हैं, अभी इस समय स्टार भी हैं, शाहिद कपूर के फादर हैं आपके कुछ लोगों के लिए, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था, उठना बैठना था। उनसे रिक्वेस्ट की और उनको मैं फिर अपने कॉलेज लेकर आया, और हमने कॉलेज में उस समय एक बीच में ग्राउंड होता था छोटा सा ओल्ड बिल्डिंग में, वहाँ पे जस्मा ओढ़न नाम का एक प्ले किया जो पंकज भाई ने डायरेक्ट किया, और मैंने उसमें बहुत अच्छा रोल किया। वो बड़ा कमाल का प्ले हुआ। उसके बाद ड्रामा कॉम्पिटिशन्स इंटर कॉलेज मैंने वहाँ ऑर्गेनाइज़ किए, डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किए। तो वो देशबंधु कॉलेज से वो जो एक कॉन्फिडेंस मिला स्टेज पे काम करने का, ड्रामा कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज़ करने का, वो जो एक कॉन्फिडेंस मिला, वो उसके लिए देशबंधु कॉलेज ही है जिसकी वजह से मुझे ये मिला। और मैं बहुत यकीन से बता सकता हूँ कि देशबंधु कॉलेज का वो जो कॉन्फिडेंस है वो आज भी मेरे पास है, जिसकी वजह से मैं आज 64 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं आज भी वो संघर्ष मेरा अनवरत जारी है। और मैं आज भी फिल्म्स कर रहा हूँ, अपनी वेब सीरीज़ बना रहा हूँ। और मैं मैडम और प्रिंसिपल साहब से ये कहना चाहता हूँ इस मंच से कि हमारे फिल्म या जो भी वेब सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, देशबंधु कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी वेब सीरीज़ और फिल्म्स में लूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि बॉम्बे में मुझे पहले नहीं मालूम था, मेरे एक जानकार हैं, वो 87 बैच के हैं, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं फिल्मों के। और मैं जब उनसे मिला तो बात करते करते उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली में था और देशबंधु कॉलेज, मैं कहा तुम देशबंधु कॉलेज से हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यार मैं भी देशबंधु कॉलेज से हूँ। कौन से बैच से हो? मैं कहा 79। उन्होंने कहा सर मैं 1987 का हूँ। बहुत बड़ा नाम है, आपकी बहुत बड़ी फीचर फिल्म जो है, चाहे वो शमशेरा हो चाहे कुछ हो, उसका वो कास्टिंग डायरेक्टर, उसका नाम जोगी है। एंड कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ कैमरामैन, काफ़ी लोग देशबंधु कॉलेज के हैं जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और मैं उनसे परिचित हूँ। और मैं उनका एक ग्रुप मैं धीरे धीरे बनाता जा रहा हूँ। और मेरा जो मेरे क्लास फेलोज थे उनका ग्रुप आज भी मेरा बना हुआ है।
हमारे कॉलेज का, देशबंधु का, हमारे सारे क्लास फेलोज आज भी हम मिलते हैं। और अभी रिसेंटली हमने प्रेस क्लब में 79 बैच के अपने जो हमारे क्लास फेलो थे उनकी गेट टुगेदर भी की थी। तो देशबंधु कॉलेज का वो जो है आज भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये मैसेज मिला 70th का। तो मैं, आप यकीन मानिए, मैं बहुत सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई हमें बुलाए और हम यहाँ आए और अपनी कुछ बातें कहें, कुछ लोगों से मिले। इसका बहुत इंतज़ार था और ये हुआ। और जिन लोगों ने ये डिसाइड किया और इसको ऑर्गेनाइज़ किया, वी सैल्यूट देम। आई मीन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने याद किया। मैंने कल परसों मैंने प्रेम भार्गव जी भी हम मेरे स्कूल से, हमारे स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो देशबंधु कॉलेज में है, उनका भी एक ग्रुप है। तो मैंने प्रेम भार्गव जी को कहा, मैंने कहा भाई इस तरह से कुछ हो रहा है, देशबंधु कॉलेज का बनाया जा रहा है। अरे कहाँ हो रहा है यार? मैंने कहा वहाँ जनपद पे हो रहा है, आ जाओ। कहते ठीक है मैं आता हूँ। प्रेम भार्गव जी हम एक ही स्कूल से हैं और प्रेम भार्गव जी को मैंने फ़ोन किया, फिर कुछ और लोगों को फ़ोन किया और आज कुछ काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मिस्टर पाई यहाँ पे मेरी क्लास के यहाँ मौजूद है, मेरी क्लास के कुछ और लोग भी आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। इस तरह का हर साल होता रहे। और मैडम आप जब कहेंगे, जिस समय कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं हाजिर हूँ देशबंधु कॉलेज के लिए। जब आप कहेंगे ड्रामेटिक सोसाइटी में कोई वर्कशॉप हो, प्ले करना हो, कुछ करना हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक लास्ट बात बता जाइए, मिस्टर सचदेवा ने कभी अटेंडेंस के लिए तो आपको तंग नहीं किया होगा? Never. I wanted to hear that. Thank you so much. We've had the best of times with Mr. Sachdeva in the Commerce Department. So I'm glad that you're sharing all of that with us. And the best part is that we are getting offers from every different kind of alumni industry that they belong to, where our students can take opportunities and move ahead. Thank you so much to you also, sir. We also have Devakar Sharma ji, the director, unassuming person, sat at the back. I had to call him here. Sir, आपका तो हमने उसमें वीडियो भी देख लिया था. You're welcome. Please come up here on the stage. We'd love to felicitate you. नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को, यहाँ उपस्थित सभागार में सभी छात्रों को एवं मेरे कुछ जो हैं टीचर अवेलेबल प्रस्तुत हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई वॉज वंडरिंग व्हेन आई गॉट द कॉल कि यहाँ सभी एलुमनाई आ सकते हैं या कुछ हैं, एंड आई लर्न, और अभी बताया भी गया था कि क्या क्या प्रोसेस उसमें हुई है क्या नहीं। सो माई बैचमेट्स, माई फ्रेंड्स विद whom I'm in contact, so they are also aware of, and they were very keen of coming, but then realizing that there could be limitation or something, they decided otherwise. Coming to being student of Deshbandhu College in those days, 84 was the year when I joined, and contrary to what many people said, I was living in Kalkaji. I did go to university campus in North Delhi to see whether I should go there, apply there or not. Realizing the distance that I had to travel from Kalkaji to North Campus, I decided otherwise. There is this college within a kilometer's range, let's apply there. And I think the decision was not bad at all. Whatever ranking or something, no one was bothered those days. But the faculty and the environment at the college campus was
really good. I think it was the inspiration of the teachers there that we still, I mean, all of us batchmates are still together. I mean, the way the energy levels were there. And that was the encouragement from the teachers that we reinitiated Zoological Society of the college and brought out the magazine. So basically it is in us what we want to do, and we do what we have thought of. That's one thing that I realized in life. Right from the beginning, your thought process carries you where you want to go. Yes, there are enablers and there are disablers. And I'm sure in the students, that energy is there that will take to them where they wish to go. The faculty here will provide that support, has been providing, and Deshbandhu would be doing wonders. And one more thing I will repeat here, and just to keep myself brief. I think Deshbandhu people are kind of work from behind and not come to forefront. But their excellence, their meritoriety, that doesn't go down at all. And I'm sure Deshbandhu will do wonder. I'm being proud alumni of this college. Look forward to working with the college as much as possible. Thank you very much. Thank you so much, sir. I think that's also a very important aspect of us, where all of us may not come out in the open and speak, but working from behind and having the excellence is also a quality that Deshbandhu exhibits. And I think that we can also see in a whole team that was there today working at the back. We also have with us Professor Ravi Toteja. He's the officiating principal of Acharya Narendra Dev College. Sir, bata dijiyega, how many life comes a full circle? Is there something that you feel today that has happened? We would love to hear it from you. We felicitate you, sir. Welcome. Namaskar. It's really very proud moment for me to be standing here and addressing the gathering. Respected Shri Vatsji, Governing Body Chairman, Principal Rajiv Ji, and my teacher Kamal Sir, Varsha Ma'am, and my fellow colleague Manisha, and other dignitaries on the stage. Dear students, my fellow alumni, हम सब के लिए बहुत ही एक गर्व का आज दिन है कि हम यहाँ पर हैं और we are here only because of Deshbandhu College. And I feel really pride that whatever I am today is because of Deshbandhu College. It's because of the grooming of the teachers of Deshbandhu College that whatever I have achieved is I am here. जैसा कि अभी बताया कि क्लासेस बंक भी करते थे और प्रॉक्सी भी चलती थी, लेकिन मैं शायद उनमें से नहीं था। और यहाँ पर कुछ होते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, पूरी क्लास कर देती है, बंकिंग का करती हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं हमने तो पढ़ना है, तो मैं उनमें से था। और इसमें एक ही अच्छी बात है कि चाहे जितने भी कम स्टूडेंट्स होते थे, हमारे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स उन बच्चों की क्लास लेते थे। इट वॉज नॉट दैट कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनको नहीं पढ़ाना। इट वॉज अ डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स दैट दे यूज टू टेक क्लासेस ऑफ इवन फ्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन टीचर्स में है देशबंधु कॉलेज की, वो कहीं पे नहीं है। और आज भी जब मैं भी अपनी क्लास लेता हूँ
तो मेरे को अपने टीचर्स ही सामने याद आते हैं, किस तरह से वो मेरे को पढ़ाते थे और किस तरह से वो बिहेव करते थे स्टूडेंट्स की तरह। तो पूरा का पूरा जो कुछ भी मैंने सीखा है देशबंधु कॉलेज की टीचर्स की तरफ से सीखा है और उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सो मच। और मेरे हिसाब से देशबंधु कॉलेज नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। थैंक यू। चलो, now all of you can take it easy. Number 1 हो गया सब, we are declared. Okay, we also have with us Professor Rangabhashyam. He is the Deputy Registrar, Finance, University of Delhi. He is there with us. Mr. Rohit Parmar. Rangabhashyam sir. Okay. Mr. Rohit Parmar, Container Corporation of India. He's the GM Finance. If you're here, sir, with us. We got these confirmations, so hoping that... Okay, we have Professor Alok Bharti, Department of Zoology. Aye, sir. Warm welcome. थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे सभी टीचर्स, इनफैक्ट देशबंधु कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं उनको चरण स्पर्श। और आज ये एक बड़ा ही अनोखा मंच है और मैं सभी को इस मंच से जब देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को उतना ही एक बहुत हम्बल फील कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं पहुँचा हूँ उसमें अगर ये देशबंधु नाम का अगर स्टोन हटा दिया जाए तो आई थिंक ये पूरी इमारत ही गिर जाए। मैं जो ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, बट जिस तरह का हमारी एजुकेशन थी, आई थिंक उस टाइम में ज़्यादातर सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल से ही आते थे। बहुत कम लोग होते थे जो प्राइवेट स्कूल और एलीट स्कूल से होते थे। तो हम एक गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए लोग, उसके बाद जब बहुत अच्छा भी परसेंटेज नहीं है तो मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम 1991 टू 94 बैच, और उस ताज़ा उसमें मंडल कमीशन का अभी बवाल ख़त्म हुआ था। तो ख़ास तौर से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोर देशबंधु का नाम बहुत चर्चाओं में था, तो किसी को बताते हुए भी थोड़ा सा आदमी हिचकता था कि देशबंधु कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं। इतना अच्छा भी नहीं था कि हम कहीं नॉर्थ कैंपस में किसी कॉलेज में ले सकें, उतना भी अच्छा नहीं था कहीं साउथ कैंपस के मेन कॉलेजेस में ले सकें। तो जो मिला, शायद हमारा सोचा कि शायद यही भाग्य था, मिल गया, बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। लोग अभी तक बात कर रहे थे कि नॉर्थ कैंपस से या झिलमिल कॉलोनी से आना देशबंधु कॉलेज एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन का। हम तो 6 किलोमीटर दूर रहते थे मदनगीर के पास, वहाँ से आना भी उतना ही मुश्किल था। बसों से 427 नंबर जिसके सारे शीशे टूटे हुए हों, उस 427 पे एक शीशे पे हाथ रख के लटक के आना, वो हमें अभी भी याद है। पर आज की डेट में आई थिंक आई स्टिल लव एंड दैट्स अ ग्रेट फैंसी। I come from very mediocre family. My both the parents were blind by birth, but my
father was a teacher, so it was always the values that were given that whether it is a good college or bad college, students should be good. If the student is good, the organization itself becomes good. And I think all teachers by default, since they are not the person, that is the place, it is the most important position where they are always good because they are delivering. It is not a matter how much they deliver and how far they can deliver, but a person who is actually have a hands to donate, and that to a most precious, item on this word is the teaching, because it's imparting the experience. So the kind of people we came, I think मैं आज अपने वही टीचर प्रोफेसर बीपी सक्सेना की आज बात भी हो रही थी कि हम लोग जब अपने कॉलेज में एंटर किए उस टाइम हम लोग ऐसा लगता था कि हम ब्रैकेट्स में, वी वर लाइक larvas, and we got a metamorphosis, particularly during the period of those 3 years when we were in Deshbandhu College, and we became young, energetic adults. So that transformation from a boy to a young, energetic man, I think that was marvelous. That was not witnessable to us at that particular time, but as we moved forward, particularly through the masters and then all other studies, I think there are a lot of people, they did not follow the trail which I followed, or one of my friends is also with me, Dr. Shivram. He's also another very important scientist in that place. But if I look back, except the both of us, others are not in science, so they are doing something else, but they are also excelling. So that does shows that it's not just science that has been imparted. There are many more values that we get within the class and outside the class within that particular area. What you talk about sports, the music, and I still remember that we used to sing just outside to our department, Pink Floyd's "We Don't Need No Education," and that too on top of the voice. I remember Deshbandhu for that particular song. और ना जाने बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या शेयर करें. जब हम अपना ग्रुप्स में मिलते हैं तो हमेशा हम उसी टाइप का वही 20s के ग्रुप के एकदम बच्चे बन जाते हैं, whether we are 30s, 40s, and now we are entering 50s. So it's that kind of association, and today when I have gone to the department and in the main department of University of Delhi, I always look back with humility that I think that is a place where we started, and now certainly I think it is not to be said anywhere in any platform. It is our college, it's our family, and anywhere and everywhere, if you need any kind of help, whether you demand it or not, that will be available. Thank you very much. Thanks a lot. I think the family bit is a huge takeaway, that is what it is for us. And the offering of help is coming from so deep within the heart that it seems that our students are going to have many more opportunities in the near future. We also have with us Professor Rangabhasham, the Deputy Registrar, Finance. Sir, University of Delhi. I thought I was going to see somebody oldish. You're more than welcome, please. We'd love to felicitate you.
Namaskar, dignitaries on the dais, and everyone present in this hall. I'm really overwhelmed. Thank you so much for honoring me. All my predecessors were much illustrious, you know. So I'm really overwhelmed by this. I am Rangabashyam. I'm currently Joint Registrar in University of Delhi. I look after finance and internal audit. I joined the college way back in 1990 and passed out in 93. And have fond memories of the college days, although the first year was almost nil, you know, like you can think of it now, you know, we had Corona for 2 years. At that time we had the Mandal Commission agitation and used to have a lot of problems, strikes. The first year was almost washed out. We used to have strikes, everything, buses were being burnt, roads were being blocked and all those things. But from second year onwards, it was uneventful and, you know, we moved on. I wasn't a very good student as such, you know. I was a you know, average kind of a student, very shy, very introvert. I never used to talk to anyone. And I was just out of school. And, you know, this changeover was actually overwhelming. In school, you have one particular classroom, you have a class teacher, you go to the same class. But when I joined college, I was expecting something similar, but it was a shock, a culture shock kind of. One class used to be at one place, another class at another place, the third class in the new block in some floor. So to get, you know, accustomed to such thing, and slowly, you know, I improved. I was very introvert. And when I came out of school, I could hardly speak English. And this goes to the credit of my teachers in the college. And after that, you know, the confidence which comes into you, you start liking the language. In English specifically, I remember there was one book by the name Nectar in a Sieve. Maybe some of you would be remembering, by Kamala Markandeya. And our teachers used to explain it so perfectly that, you know, you was almost into that story, into that novel, Nectar in a Sieve. So, and I'm saying this because I could hardly speak English. I was so shy and all. And eventually I went on. I got empaneled as an English newsreader with Doordarshan and All India Radio. And even today I do a program called Market Mantra, which is basically a stock market program, a financial literacy program on AIR FM Gold. I do it now since I'm with the university. I do it only on Saturdays and Sundays. So that's what I'm saying. And as Prabhu Chawla Saab said, you know, there are n number of colleges which are considered top and best, because they take people, they take students who have a cutoff of 98, 99, and then, you know, they do well in life. That is not a big thing. Whereas Deshbandhu College, which takes in average students, and then if they can make it big, that's something really big. So I really like this particular aspect of our college, Deshbandhu College, where, you know, people from ordinary backgrounds, people with not much of marks, they come in, and when they go out, they have achieved something. So that is what I like about my college. I have fond memories of the college. So thank you so much for having me here. Thank you so much. Professor Tapasya Srivastav is also with us, Department of Genetics, South Campus, University of Delhi. Ma'am, welcome, and we'd love to felicitate you and hear from you as well.
Hi everyone. Greetings to everybody on the dais. I'm absolutely unprepared for this. I had no idea I was going to come here. But the good part is that I feel whatever confidence that I have today has come from being at Deshbandhu, and that is the important part. As we've moved on and we've heard from everybody that people joined at various stages of their lives, maybe underconfident at some point of time, not knowing where to go. I would say the first thing that helped was absolutely superb teachers, absolutely fantastic teachers. And being in the department that I was in, which was zoology, practicals and all were very important. So the kind of effort and the kind of, taking care of very small things that teachers took care of helped me move ahead, at least in this path. And I would forever be grateful for that to all the teachers of the zoology department particularly, but also botany, because that was right next door. So I think I spent a lot of time also in the botany, or rather sitting in the middle in that part which is joining the two departments and just whiling away time. And often would get scolded by a lot of the teachers, you have to maintain focus. I also remember daydreaming in class, looking out of the window to I don't know what, and then suddenly I would get a small chalk on my head, you're not paying attention. So all kind of things happen, and a lot of things we learn. But I think also apart from this excellence in teaching, what I felt was very important was an opportunity to meet different people from different backgrounds. And whether it was in the DTC buses, being scolded by some of the seniors क्योंकि तुमने staff नहीं चलाया, तो वो कैसे हो गया, तुमने पैसे कैसे दे दिए तुमने DTC वाले को. So from there, from moving on to that, to people who were from English department, commerce department, I met so many people and I had so many friends. I may not have kept in touch with all of them, but I feel a part of them always stayed with me. And it allowed me to balance idealism, which you always get. Idealism is something that college students should have, and they do have. But Deshbandhu also teaches you reality. So balancing idealism and reality is something which is not easy for students to do, but Deshbandhu tells you and teaches you how to do that. So I'll be forever grateful to Deshbandhu for giving me all of that. There's so much to say, but then I don't know, I can't, my colleagues, it's a very small world, especially for the science academics. A lot of us are very well connected, and there's so many people I can see here from who are my juniors, Vinita here, my seniors who are here, so many people, and we are connected in some way or the other, so that has tremendously helped us in sort of helping each other and holding hands and moving together. And that's what also the alumni network is supposed to do. And I would be more than happy to help in any way possible. Again, the same as Alok said, being at the university department, there are some advantages, especially having a lab of our own. We know that the undergraduate research programs are something which are being highlighted in NEP, and people want that, that should happen and should be made into something more solid, a more solid structure. So, my lab is open for that. And whenever the opportunity arises for anybody and to have that kind of a collaboration so that we can move ahead with this, it's, I would be there, right there for everyone. So with that, like I said, it's an unprepared speech, so I have no idea what to say, except thank you very much. Thank you to the Deshbandhu fraternity, and I would definitely like to thank the staff, especially the laboratory staff, because when I was not able to pit the frog, they pit the frog and gave it to me, which really helped. So thank you. Thank you, sir. Yeah. Should I take? Ooh, small secrets coming out, huh? Okay. Dr. Garima Gupta is also with us, scientist F in the Department of Biotechnology. Is Dr. Garima Gupta here? Dr. Sivaram VS, Associate Professor, Regional Center of Biotechnology. Dr. Atul Grover,
Dr. Sivaram. Welcome, welcome. Sir, we'd love to felicitate you, and we'd love to hear from you too. Hello, Namaskar. To all the students, those who are still here, इतने illustrious alumni के बाद अगर मैं ज़्यादा time लूँगा तो I'll become the most infamous one. तो मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा. I also overlapped. First of all, it's a big honor for me to be invited here. It was a great pleasure. Thank you very much to all the dignitaries here. Kamal sir personally called me. He has taught me. And actually, I should also begin with a small anecdote. Actually, एक के बाद एक इतने दिग्गज लोग बोल गए, मेरे कंटेम्प्रेरीज आलोक और तपस्या भी बोल गए, तो मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं बचा था. तो आई हैड टू एक्चुअली टेक नोट्स कि मैं कोई तो एक नया पॉइंट बोलूं, बिकॉज यू नो वी ऑल फील द सेम थिंग. बट आई फर्स्ट लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट यू नो परहैप्स अ स्लाइटली कंट्रोवर्शियल पॉइंट. जब हम कॉलेज में थे तो बिल्डिंग उतनी इम्प्रेसिव नहीं होती थी. इट डिडंट यूज टू फील वेरी नाइस. तो सम ऑफ अस एंड द ओल्ड ब्लॉक के बारे में एक जो अभी अंबेडकर ब्लॉक में देख रहा हूँ जिसका नाम है अभी, शायद उस वक्त नाम था या नहीं मुझे याद नहीं है. इट यूज टू बी कॉल्ड द ओल्ड ब्लॉक एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट वहाँ था, मैं भी जूलॉजी का था. वी यूज्ड टू गो फॉर सम प्रैक्टिकल्स एंड द जनरल रूमर वाज दैट उधर ध्यान से जाना और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है. यू नो दैट्स व्हाट आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर दैट, बोलते थे लोग. एंड द लैब्स यूज्ड टू लुक वेरी डिलैपिडेटेड, बट दैट्स द फिजिकल पार्ट ऑफ इट. And what you realize with time is that, you know, the buildings actually don't matter. It's just the people that matter. वही buildings आज renovate भी हो गई हैं. आपके पास और भी अच्छी buildings आ गई हैं. Now the campus looks, you know, there is a familiarity to it, but it also looks much newer, and of course that will happen. But the people are what matter. So वो मैं दोहरा रहा हूँ फिर से. The faculty were really the pillars that helped found us, sort of shape us. And then, of course, we made a lot of friends, and you know the freedom that you get with deciding how you want to use your so-called free time. No bandishein nahi hai abhi, but how do you manage your time, study at the same time, have fun? वो सब अच्छा था. And एक anecdote मैं share करूँगा with Kamal sir's permission. So he keeps reminding me that he joined Deshbandhu College as a faculty. I think you had just finished your PhD. Yes, so we joined at the same time, and I can see Ranjana ma'am also. I think she also taught us cell biology. This was in the third year, but first year में श्यामला सुब्रमण्यम मैम का जिक्र हुआ था. I don't, yeah, she is not here. वीणा भट्ट मैम ने हमको second year में कोऑर्डिनेटर पढ़ाया था. Thank you very much, ma'am. And if I'm missing anybody that I cannot recall here that taught us, please forgive me. But a lot of respect to all of you. But third year में जब सर कमल सर हमको माइक्रोटोम, it's a way to section some tissues, वो पढ़ा रहे थे हमको. And सर just fresh PhD से आए थे, हम लोग BSc में थे. And बहुत भीड़ थी and मुझे दिख नहीं रहा था कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है. तो मैंने अपने दोस्त के कंधे पे हाथ ऐसे रख के देख रहा था मैं कि दिखे तो सही कुछ. एंड वो थे कमल सर. वो पीछे मुड़ के कहते हैं कि हाँ यस कैन आई हेल्प यू, बिकॉज वो दिखते हमारे जैसे ही थे. ही वॉज इन जीन्स, टी शर्ट, स्नीकर्स में होते थे. But it's really an honor to be, you know, to see that he is now risen to the professorship and a vice principal. And a great honor to receive this felicitation from him, from the current principal as well. To all the teachers, thank you very much. Please cherish your time in college. And to the students, wonderful job that you did यहाँ पे. I was really impressed with the videos. Nice memories. So keep it up, great. And the rankings don't matter. The substance matters. Rankings don't matter. Thank you. Thanks a lot.
with every little anecdote, we've learning some small secrets about things, and maybe we can share them again at a later stage as and when required. Do we have Dr. Atul Grover? Wow, how nice to have you, sir. Scientist E, Defense Institute of Bioenergy Research, Haldwani. Welcome, sir. We'd love to felicitate you. And here for you as well. Thank you very much. In fact, coming so late into this series, it is hardly anything left to speak because all the stories look almost the same. Entering into the college with not so good marks, spending some time into layer after entering into the first year, and then getting serious about the education because you get such blessed teachers who take care of you more than you take care of yourself. But if I have to speak something different, I would actually like to confess something from here that my credit to success goes to the educational or teaching environment in the college, but also to one girl. After, because of her, actually, I started studying so seriously. It was actually sort of a love at the first sight that I started following her, and only thing I knew how to impress her was to study, study, and study. And in the process, actually, I forgot that why I was studying, and I just scaled some new heights into the academics. I went for MSc, I went for PhD, I became a scientist in DRDO. Thank you. But actually, there have been two defining moments in my 3 years of college. Of course, that I do thank all my teachers, both from the botany as well as zoology, who had ever came into the class and taught me anything. But there have been two defining moments which actually made me realize that why I was in the college. One was in the first year when Ranjana ma'am, she asked me what are isolecythal eggs, and I could not answer that. Ma'am, I could not answer that time, but I can answer it now. I can still answer that now. The second incident was again from the first year when Kamal sir told me that you don't have to play with the pila, but you have to break its shell. So these were the two most defining moments, plus apart from that, chasing that one girl, that made me scientist. Thank you very much. Thank you all my teachers. Thank you so much. So at least we are totally confident that we can answer some questions today, which we could not at those earlier times. But yes, I think the most important person I would want to call as an alumni is our very own Professor Anil Rai. Sir, as an alumni as well, the treasurer of our governing body, and with the list of the sammans that you also just got, we are more than happy to have you here. Please, sir. Felicitate bhi karenge, sir. Please. प्रोफेसर राय 3 कैपेसिटीज़ में इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। पहले यहाँ के छात्र रहे, कुछ दिन इन्होंने यहाँ पढ़ाया भी, और अब हमारे गवर्निंग बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट सहयोगी हैं, कॉलेज के ट्रेजरर हैं।
सम्मानीय मंच और मित्रों, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। 1980 में मैंने इस देशबंधु कॉलेज में एडमिशन लिया था BA ऑनर्स में। उस समय जो अध्यापक हमें पढ़ाते थे, क्योंकि मैं ऑनर्स में था तो अन्य विषयों में इतिहास और राजनीति शास्त्र और अंग्रेज़ी, इन 3 विभागों से ही मेरा ज़्यादा परिचय रहा। अंग्रेज़ी के अध्यापकों में मैं याद करता हूँ ऑल माई सन्स का और नेट नसीब का यहाँ उल्लेख किया गया। ये हमें प्रोफेसर DS भल्ला पढ़ाया करते थे। दूसरे अध्यापक थे प्रोफेसर उपकार सिंह, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स थे। अंग्रेजी वैसे हमारे लिए हवा थी, लेकिन ये दोनों अध्यापक इतनी इंसाइट के साथ पढ़ाते थे कि क्लास छोड़ने का मन नहीं करता था। और एक बड़ी हास्यास्पद घटना मेरे साथ हुई। नया नया दिल्ली में आया था। मेरे चाचा जी का ऑफिस वाई भवन एयरफोर्स हेडक्वार्टर में था। मैं उनके साथ वहाँ तक आया था। उसके बाद मुझे 440 नंबर बस पकड़ करके कालका जी आना था। बस इतनी भरी हुई थी ठसाठस कि बैठने की क्या, घुसने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं घुसने की कोशिश कर रहा था और मैं बस से गिर गया, क्योंकि उस समय ऐसी अराजकता नहीं थी कि आप बस में, DTC की बस में कहीं से घुस जाएंगे। पीछे से चढ़ना पड़ता था और भीड़ को चीरते हुए आपको अगले गेट तक पहुंचना पड़ता था। मैं पिछले गेट पर चढ़ते समय ही गिर गया और मेरे घुटने के दोनों तरफ जो मेरी पैंट थी वो फट गई। खैर आज तो वो मॉडर्न होती। और बड़ा शर्माते हुए, क्योंकि अंग्रेजी क्लास में छोड़ना नहीं चाह रहा था, बावजूद इसके मैं कक्षा में पहुंचा। मेरी एक अध्यापिका यहाँ पर डॉक्टर शशि मेहरा विद्यमान हैं, और मैंने आयोजकों से ये भी कहा है कि वो भी एलुमनाई रही हैं इस कॉलेज की और यहीं अध्यापिका भी रही हैं, तो कुछ समय के लिए उनका भी वक्तव्य आप ज़रूर दिलवाइए। और मैं एक बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि देशबंधु कॉलेज के अध्यापक कितने डेडिकेटेड, कितने समर्पित हुआ करते थे। मुझे याद है कि 1982 के आसपास एक लंबी हड़ताल हुई थी डूटा की। लगभग 3-4 महीने तक वो हड़ताल चली थी और उसमें अध्यापक अपने घर बुला करके पढ़ाया करते थे। शशि मैडम उस समय डॉक्टर शशि वोहरा हुआ करती थीं, शादी नहीं हुई थी। और मुझे याद है कि मालवीय नगर इनके घर पर हम पढ़ने जाया करते थे। इसी तरह से एक हमारे बड़े ही लोकप्रिय और समर्पित अध्यापक थे, कोहली साहब की तरह डॉक्टर रामस्वरूप शर्मा। B22B आज भी मुझे याद है। उनका घर, कॉलेज और हम लोगों के गुरु गृह दोनों हुआ करता था। जब भी मन होता था उनके यहाँ हम लोग पहुँच जाया करते थे। तो मित्रों, देशबंधु कॉलेज की इतनी सारी यादें हैं और उन यादों में इन अध्यापकों की क्या भूमिकाएं हैं, मैं समझता हूँ देशबंधु कॉलेज उसके लिए भी याद किया जाएगा। रैंकिंग की बात हुई। रैंकिंग वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरह का आजकल चलन चल गया है उसमें आप देखते हैं हर आदमी चाहता कि उसका रैंक ऊपर रहे। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में बाहर बोर्ड पर ही लिखा होता है नैक की इतनी रैंकिंग। खैर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम 60% वालों को एडमिट करके 65% के साथ विदा करते हैं तो उसमें देशबंधु कॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। Thank you so much, sir. Yet again, I have been saying that since morning, and it's still wonderful to listen to you. We have Professor Monica Kaul also here with us, and we have 2 of our
colleagues as well, we'd like to felicitate you. We'd love to welcome you. Please. Aye, ma'am. We also have Eklavya Chauhan sir and Shashi ma'am. If you could also please come up to the stage. Dr. S.K. Agrawal is also here. And before that, I think we'll also have Professor Monica. Please share a little thoughts with us. Thank you. Thank you so much, everyone on the stage and off the stage. There are many students here, and I'm still a student. I'm teaching in Hansraj College, and what I am today is because of Deshbandhu College. मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी for the students. When I came, I was a migrant. We had migrated from Kashmir. अपने ही देश में विस्थापित होके आए थे. And I was in a very good school in Kashmir. But suddenly, I had to go to a camp school, which was meant for only migrant students. But when I came to Deshbandhu College, क्योंकि background अच्छा था, तो theory आती थी थोड़ी बहुत, पर मुझे practicals बिल्कुल नहीं आते थे. But I thank all the teachers of the Department of Botany and Zoology. They instilled in me the confidence, the way one can look at science. I mean, I remember Tapasya, Padma was there, so we were all contemporaries. But the way we were taught in the labs, that ingrained in us to see science from a different perspective. I'll take a minute. Rankings and all is fine, but every college has a character. And this college has character of excellent teaching. And it is the dedication of the teachers that we are here proudly on the stage. Please maintain that character along with the ranking. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thanks for having me, sir. I am just a small person on this dais, but I thank college for what I am today. Thank you. Thank you so much, ma'am. Shashi ma'am, Dr. Shashi Mehra and Dr. Eklavya Chauhan also, we will, आइए. Ma'am, it's so nice. आप लोग का नाम बार बार लिया गया. हम हर्ष से, मतलब हम फूले नहीं समा रहे हैं सुन के. आप सभी के नाम, आप सभी की, आइए मैम. पुराने दिन कुसुम बांथिया मैम, सारे लोग इकट्ठे बैठना स्टाफ रूम में, छोटा सा स्टाफ रूम, उसमें गाने गाना, वो भी दिन थे. बहुत अच्छा लगता था. मेरे लिए पूरे सम्मान के साथ मैं मंच को और सभागार में बैठे अपने सभी छोटे और बड़े साथियों को अपना हार्दिक स्नेह देते हुए इतना ही कहूँगी कि इस कॉलेज में मैं 1967 में हिंदी ऑनर्स की छात्रा बनके 16 साल की उम्र में आई थी और 2016 में मैं यहाँ से एक प्राध्यापिका के रूप में रिटायर हुई हूँ. ये करीब आई थिंक 55 साल की यात्रा मेरा पूरा जीवन है. इसमें मैं 1979 में इस कॉलेज में आई हूँ और अनिल राय अगर अपना समय 80 बता रहे हैं तो बताइए, मैं उस समय एकदम अभी प्राध्यापन के क्षेत्र में बिल्कुल
एक घबराई हुई टीचर के रूप में रहती थी। लेकिन हाँ, मैं अनिल की बात को पूरा करूँगी। मेरे साथ मुझे अंग्रेज़ी के अध्यापक उपकार सिंह जी, जिनको मैं हमेशा याद रखती हूँ, अंग्रेज़ी उन्हीं से पढ़ी थी मैंने भी, और उनका पढ़ाने का ढंग इसलिए एट ईज़ मुझे करता था कि वो एक पंजाबी परिवार से हैं। पहली बात, मैं भी पंजाब की हूँ, वैसे लोग मानते नहीं मुझे। दूसरी बात कि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी पढ़ाते थे, और तीसरी बात वो इतने सहज ढंग से पढ़ाते थे कि बस लगता था इनकी क्लास में हम अंग्रेज़ी, हिंदी वाले हम अंग्रेज़ी के लिए बहुत सही टीचर थे वो। और बाकी तो मेरे सभी साथी टीचर्स, जो आज ओम प्रकाश कोहली जी, डॉक्टर रामस्वरूप शर्मा जी, और डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद, मिसेस राजकुमारी प्रसाद, और बाकी भी जो HL शर्मा जी, और बाकी जितना उस समय का विभाग था, मैं समझती हूँ उन सब ने हमें जो किताबी शिक्षा दी, उसके साथ साथ बहुत कुछ वो दिया जिसके सहारे हम अपने जीवन में बहुत सफल हुए, बहुत अच्छे से हम अपना कार्यकाल पूरा कर सके। मैं अपनी शुभकामनाएं सारी इस कॉलेज के लिए, ये कॉलेज मेरा है, ये कॉलेज हम सबका है, हमेशा हमारे मन में ये भाव रहेंगे ही। अपने सभी साथियों को जिन्होंने मेरे इस पूरे दौर में, शुरू के नाजुक दौर में भी मेरे साथ जिस तरह वो एकजुट रहे, उसमें ना कोई साइंस वाले अलग थे, ना कोई आर्ट्स वाले अलग थे, ना कॉमर्स वाले, मेरे सामने सब बैठे हैं। कुछ साथी मेरे गुरुजन जा चुके, मैं उन सबको मनोमन बस नाम लेते हुए अपना नमन देती हूँ, और हमेशा आभार है मेरे मन में उनके लिए जिन्होंने मुझे, अभी मैं यहाँ से तो चढ़ते हुए सहारा ले रही थी, उस समय यहाँ पैर टिके जब, उसमें भी जो सहारा मुझे मिला, मेरा हार्दिक नमन है उनके लिए, मैं भूलूंगी नहीं कभी। आज के अपने अस्थाई साथियों के लिए जो मेरे जूनियर टीचर्स हैं, मैं मन से कहती हूँ उनकी भी बाह पकड़ के इसी तरह उनके पैर स्थापित किए जाएं, क्योंकि ये हमेशा के लिए याद रहता है, इस सहारे की बहुत ज़रूरत होती। नमन मेरा। Can we please felicitate Professor Agarwal first? Sir, आइए। बस। Also, Dr. Eklavya Chauhan, please. Sir, been a part of our alumni as well. आइए सर। सर, आपके साथ तो यादें ज़्यादा बस लेके कहीं घूमने जाने की जुड़ी हुई हैं। Since I was not a part of your class, you're welcome. सब साथियों को नमस्कार। मैंने सुना है, और शायद ये गलत भी नहीं है, कि जो आखिरी डिब्बा होता है रेल का वो सबसे ज़्यादा झटका देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लास्ट स्पीकर रहूँगा। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा। मेरी एसोसिएशन शायद देशबंधु कॉलेज से गुप्ता जी के बाद सबसे लंबी है। मैं अपनी माता का पल्लू पकड़ के 1963 में देशबंधु कॉलेज आया करता था, क्योंकि वो पढ़ाती थी इंग्लिश। मुझे नहीं पता था कि मेरी नियति ये होगी कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ूंगा और इसी कॉलेज में पढ़ाऊंगा।
1969 में मैंने बीएससी ज्वाइन की। आलोक कुमार जी को याद नहीं है, मैं इनके साथ ही इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी चले गए थे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं टीचर नहीं बनूँगा। लेकिन जब मैंने बीएससी में पढ़ा, मेरे इतने सम्मानित टीचर यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नारायणन, डॉक्टर वी वर्मा जो नहीं आ पाए, और डॉक्टर सक्सेना जो कि यहाँ थे। इन लोगों ने मुझे जिस तरीके से पढ़ाया, मैंने ठान ली कि मैं तो अब टीचर ही बनूँगा। और सन 75 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और 2017 में मैं रिटायर हुआ। बहुत लोगों ने अपनी एक्सेलेंस और अचीवमेंट की बात की। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या अचीव किया, लेकिन ज़रूर मैंने प्रोफेसर कमल गुप्ता और प्रोफेसर मोनिका कौल जैसे स्टूडेंट्स को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो ये मैं नहीं जानता। मेरा सब अपने टीचर से नमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 जनरेशन्स बैठी हैं, एक जिन्होंने मुझे पढ़ाया और एक जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। यही हैं वो सारे मील के पत्थर जो कि बुनियाद में रखे हैं। आमतौर पे वो नज़र नहीं आते, लेकिन सारी इमारत इसी पे ही कायम है। तो मैं और देशबंधु कॉलेज हमारा जीवन पर्यायवाची है। धन्यवाद। Thanks a lot, sir. And with this, we would request all the dignitaries to please sit down on the seats here while we clean up and clear up this place, because we do have one last major folk dance to get us all cheered up again. And I would also just take a little bit while this is getting cleared. There were some colleagues whom we could not formally invite on the stage, whom we wanted to. Professor Dr. Manisha being one of them, and Dr. Rakhi, Dr. Harindri, Dr. Vibhas, Dr. Jha, Dr. Biswajit, Dr. IK, Dr. Bhavani, Dr. Pankaj, Dr. Shantanu, Dr. Minakshi, Dr. Volte, Dr. Monica. We also have Dr. Madhu, Dr. Nisha, Dr. Leena, Dr. Ashwini, Dr. Atul, Dr. Vinita, Dr. Prabha, Dr. Seema Lal, Dr. Jagpal, Dr. Vijay Pal, Dr. Anjana, Dr. Rita, Dr. Priyanka, Dr. Rajiv Gupta. All of them have been working really hard. Somewhere at the back, like was talked about by one of our alumni. Let's wait now for our grand performance, and I would request all of you to please remember to take the kits that we've made for you, especially the commemorative book that has been prepared for all of you. Thank you so much. There's a phone which is here. In case it belongs to any one of you, kindly let me know. We'll just have it passed on back to you. This phone belongs to somebody who was here.
So here we are, all set for our dance performance. This is actually representing unity in diversity. The culture of India is diverse, and yet we are bound by love and faith. This dance piece by Rivayat, our dance society, shows the different colors of India, starting with the Rajasthani folk, followed by the Lavani, and then Haryanvi. It ends with the Ras Leela, which shows no matter how culturally apart we may be, we are still bound by love, which is the basic idea of Ras Leela. Folk dance for all of you. कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन
साधु ना कसर घालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहरो छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी वो है रंगीला शेर छबीला वो है नटखट वो जमुना तट फेरे लगाए मुरली बजाए गोपियों के संग रास रचाए मुरली बजैया रास रचैया शाम सलोना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा Wow. Wasn't that a lovely performance by all of these children? Our students, Nandini Kumari, Manasvi Meena, Mansi, Ira, Palak, Satvika, Vishnu Maya, Sanjana, Roshna, Pratyaksha Ranjan, Shivang Malik. और आज मैं भरी सभा में आपसे बिल्कुल माफ़ी मांग रही हूँ कि हमने एक गलती बहुत भारी कर दी है. हमारे साथ रवि कुमार जी भी हैं आज. सर, प्लीज़ आइए एंड वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट यू. 1962 हमारे सीनियर मोस्ट बैच से सर हैं.
और ये सीधा वॉर में चले गए थे। सबको नमस्कार। मैंने ये कॉलेज 60 में ज्वाइन किया था और 63 में मैं यहाँ से पास आउट होकर के गया। मैंने इस कॉलेज में नेशनलिज्म की भावना सीखी। जब 1962 वार हुई, चाइना एग्रेशन हुआ, उस समय आर्मी के अंदर ऑफिसर्स की कमी थी। तो इस कॉलेज से बहुत स्टूडेंट आर्मी में गए, एयरफोर्स में गए, और कुछ मुझे मिले एकेडमी में मिले, देहरादून में कोई सर्विस में मिले, और उन्होंने अच्छा भी काम किया। मेरी पोस्टिंग बाद में मैं आर्मी से आकर के सीआरपीएफ में आ गया। यहाँ मैंने कश्मीर के अंदर मेरी पोस्टिंग रही, जहाँ मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिला। मेरे बड़े एनकाउंटर होते थे, ये थे। लेकिन मैं जब अपनी अकेला होता और थोड़ी परेशानी होती तो मैं अपने कॉलेज डेज याद किया करता, तो मुझे उससे सुकून मिलता। आपको मेरी बात पर शायद यकीन ना हो, एक डिप्रेशन के पेशेंट थे, तो मैंने उनसे कहा, भाई आप अकेले क्यों रहते हो, इधर साथ में बैठा करो। वो बैठने लगे, झिझकते थे। उनको अपने कॉलेज के डेज़ की बातें बताता, वो हंसते थे और वो ठीक हो गए। तो ये देखिए, ये कॉलेज में इतना बढ़िया समय मैंने बिताया। ये प्रेमनाथ मेरे साथ स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी। यहाँ पर ये साइंस में थे, मैं आर्ट्स में था। कोहली साहब, यहाँ नाम था लिखा उनका, वो हमारे हिंदी के टीचर थे। वर्मा जी थे, और मिसिस प्रसाद होती थी एक यहाँ, वो हमारी हिंदी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। यहाँ पर कवि सम्मेलन कराया 1963 में। उसके लिए एक राजेंद्र बंसल थे, वो हमारे स्कूल के भी थे और कॉलेज में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, वो हिंदी परिषद के मैं प्रेसिडेंट था, वो सेक्रेटरी थे, तो कहने लगे यार यहाँ पर वो करा देते हैं कवि सम्मेलन। तो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ये कवि सम्मेलन होता था। तो कहता आजकल यहाँ कवि आए हुए होंगे, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले वो मेरे को लेकर गए हरिवंश राय बच्चन जी के यहाँ। ये हम उनकी कोठी पे दोनों पहुंच गए। उस समय ये सिक्योरिटी वगैरह का तो होता नहीं था, हम स्टूडेंट थे, हमें नहीं पता था ये इतना बड़ा आदमी है, हमें समझ में नहीं थी कि क्या आदमी है। तो ये सोचते ये कवि है बस। और वो जो राजेंद्र बंसल थे, उनको कंटस्ट थी वो इनकी कविता, कौन सी है प्रेम, तुम बता रहे थे अभी? हाँ, मधुशाला। मधुशाला उसको राजेंद्र को कंटस्ट थी। हम उनकी कोठी में बैठ के लॉन में बैठे हुए हैं, सर्दी के दिन थे। उन्होंने वो अन्नपूर्णा की मिठाइयाँ हम खाते थे, वो मंगा रखी, हमें भी दी। ये दोनों लग गए, वो एक लाइन वो गाए, एक लाइन वो गाए। मैं बोर हो रहा, मेरे ऊपर से जा रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। टाइम मैं अपने काम पे लग गया, वो जो मिठाई थी मैं खाता रहा। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मेरे बॉस से कला दो। मैंने कहा यार ये बेकार की बातें कर रहे हैं, कौन है इनका बॉस? मैंने कहा सर आप आइएगा, देखिएगा, आप राइड ओवर करेंगे, ये यार वो। कहते नहीं, मेरे बॉस से कला दो। 2-3 दफ़ा उन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा सर आपका बॉस कौन है? कहते जवाहरलाल। मैंने कहा साहब ये तो बड़ा हैवी वेट है, कोई लाइट सा होता तो हम उठा लेते, ये नहीं होता। तो मतलब उस समय ये समझ नहीं थी इतनी कि किससे बात कर रहे हैं, कैसे कि लहजे से बात कर रहे हैं, फिर ही उससे करते थे। और उसी की वजह से गए, फौज ज्वाइन करी, आगे भी किया। और जब भी मैं अभी भी कभी टेंशन में होता हूँ या मुझे इस उम्र में, मैं आई एम 82,
तो इस उम्र के अंदर मुझे कभी कुछ लगता है कि मुझे शकून चाहिए, तो वो कुछ दोस्त जो मेरे उसमें थे, जो प्रेमनाथ अभी साथ है बेचारा तो वो कुछ चले गए, तो अब उनकी बातें याद करके, कॉलेज में जो समय बिताया उसको याद करके हिम्मत हो जाती है और तरोताज़ा हो जाता हूँ मैं। तो ये है, लाइट सी बातें हैं। कॉलेज की बैठे होते एक एक किस्से की कहानी किताबें लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं बड़ी। और यहाँ के टीचर्स बड़े अच्छे थे और अभी भी होंगे, जब इतना बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, इसको देखकर तबीयत खुश हो गई। मैं एक दफ़ा इसमें शिवाजी कॉलेज उसकी गवर्निंग बॉडी में था, तो वहाँ भी मैं जाता रहता था, वो बुलाते थे मेरे को। तो उसमें गवर्निंग बॉडी में यहाँ भी होगी, उसमें कुछ होते यूनिवर्सिटी के मेंबर्स, कुछ होते दिल्ली सरकार के और कुछ ये कॉलेज के हो जाते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से था और दिल्ली वालों को, वो जो प्रिंसिपल थी, मैं कभी दिल्ली से बाहर होता था, वो मुझसे पूछती, सर आप कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं बाहर आया हूँ। कहते जब आप आओगे जब ही मीटिंग रखेंगे, क्योंकि वो जो यहाँ के दिल्ली के जो थे मेंबर्स, वो रो मार के बात करते कि जी एजुकेशन मिनिस्टर को ये बता देंगे, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, उनको बता देंगे। एक दिन मैंने कहा यार बताओ तुम्हें ख़त्म करो ना, रोज़ की रोज़ तुम ऐसे बकवासबाजी करते हो। ये है, तो इस तरह की बड़ी बातें थी, हंसी मजाक में निकल गया। कॉलेज की बातें याद करके अभी भी तंदुरुस्त बना हुआ हूँ। और ऐसे बेटा याद रखो, ठीक ठाक रहो, मज़े करोगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, everybody. It's an honor for me to have been asked to propose a vote of thanks to all the dignitaries present here today. On the first place, I would thank the Minister, the Union Cabinet Minister, Mr. Bhupendra Yadav. Then the guests of honor, Mr. Ropi Kohli, Professor Balram Pani, and Professor Shri Prakash Singh for their presence in today's event, and I thank them for taking out time from their very busy schedule and coming here to grace the occasion. I thank Professor Anil Rai, Professor Rajiv Agarwal, and for the first place I would thank Shri Arun Vats to grace this occasion. Today's occasion. I thank the convener of the program, Dr. Chandrika Gulati, team DBC 70 for their tireless efforts to make this event a grand success. I thank the distinguished alumni who made this event possible. I thank all the retired teachers, our colleagues. I thank the non-teaching staff, the students, and all the teaching fraternity whose tireless efforts have been put in to make today's event a grand success. Thank you all. Let's stand up for national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे